A, number of distinct integral terms in the expansion of ch is, ठीक है, तो 5 power 1 अपॉन 8 की पावर r, दैट शुड बी ओके, तो 1 अपॉन 8 r मस्ट बी इंटीजर, r इज इक्वल टू 8k, और जो ये रहेगा वो क्या रहेगा 64 माइनस 8k, उसकी पावर 1 अपॉन 2 है, मतलब हाँ वो तो अपने आप फिर इंटीजर हो ही जाएगा ना, या नो बिग डील अबाउट दैट। सो ठीक है, मतलब 8k के जितने वैल्यूज हो सकते हैं वो क्या होगा, 8 होगा, चलते जाओ कब तक, टिल 8, जब r 8 हो जाएगा देन इट्स लाइक यहाँ पे 64 पावर पूरे अपन ने कॉन्सेंट्रेट कर डाली, या सो 0 से स्टार्ट होते हुए 8 तक, विच मीन्स 9 डिस्टिंक्ट टर्म्स है जो कि इंटीग्रल है। सो ए का आंसर आर, यस, बी करते हैं। Number of values of r satisfying this equation. So 69 c 3r minus 1 minus 69 c r squared. गंदा है बहुत। अच्छा इसको उधर भेज दो, सो 3r minus 1 और 3r, हाँ ठीक है, वो कंबाइन होकर क्या हो जाएगा 70 c 3r प्लस सिर्फ 3r, सॉरी नॉट प्लस 1, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कंबाइन होकर क्या हो जाएगा 70 c r स्क्वायर्ड, राइट, बेसिकली ये चीज। सो क्या हो सकता है, 3r इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो सकता है, या फिर 3r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 70 हो सकता है, राइट, यही दो पॉसिबिलिटीज रहती है इसकी, और कुछ नहीं हो सकता है, यस, राइट, बिकॉज बीच में तक इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, सो या विच मीन्स दैट आइदर r इज 0, r इक्वल टू 0, और r इज इक्वल टू 3, ये वाला सॉल्व करके देखते हैं। सो 3 ओके, सो लाइक r प्लस 3 टाइम्स r इज इक्वल टू 70, राइट, ओके, चलो देखते हैं, 70 कैन बी रिटन एज 7 times 10, of course, yeah, okay, 7 times 10, तो r 7 होगा और ये चीज 10 होगी, राइट, सो r कैन बी 7 एज वेल। तो ऐसे तीन वैल्यूज हो सकते हैं, या नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ r satisfying this thing, it must be 3। इन लोगों ने और वैल्यूज किसे दी है इसमें, दिस इज नॉट करेक्ट, इससे ज्यादा भी बच सकते हैं, आई डोंट गेट इट, ये तो इंक्रीजिंग है ना इन टर्म्स ऑफ r, या मतलब पॉजिटिव r से रहेगा तो ये तो इंक्रीजिंग रहने वाला है, और नेगेटिव तो अपन रख नहीं सकते बिकॉज वो मतलब नहीं बनता है, सो दिस इज द ओनली वे। बट देन फिर इसमें तुमने 3 नहीं, तुम्हें 4 के ऊपर वैल्यू चाहिए, ओके, नो दिस डजंट मेक एनी सेंस, r कैन बी 0 और r कैन बी 3 और r कैन बी 7, दैट्स द ओनली थिंग, इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते, राइट, या एग्जैक्टली, और क्या हो सकता है, नहीं इतना ही है, तो इसके जस्ट 3 आएंगे और वो है नहीं ऑप्शंस में, जस्ट बोल देते नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ r satisfying this thing is 3, not in options। Next, wait, अच्छा अगर r let's just say 3r minus 1 और r स्क्वायर मैंने बहुत बड़े रख दिए, देन अच्छा ठीक है, वो डेफिनेशन अपने को नहीं लेनी है इसमें। ओह वेट, r इक्वल टू 0, शिट, r इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, ओह ओके 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 ओके, और ये भी डिफाइंड नहीं होगा, राइट, समझा क्या गलत हुआ, सो r इक्वल टू 0 काम नहीं करेगा, r इक्वल टू 7 49 काम करता है, इट्स गुड इनफ, ओके, r इक्वल टू 3, यस वो भी काम करता है, वैसे 2 रहेंगे, सो 2 कौन से ऑप्शन में, क्यू, अच्छा इसलिए, ओके, नेक्स्ट में है सी विच इज, बट एक्चुअली में 0 काम करता है क्योंकि what you can do is just yeah like 69 से नहीं, नहीं काम करता है एक्चुअली, थिंग इज कि जब 69 सी नेगेटिव होना चाहिए वो चीज़ अपने आप 0 हो जाती है, सो वो काम करता है बट इनके डेफिनेशन में नहीं करेगा क्योंकि वो डिफाइंड नहीं, ठीक है सी करते हैं, इफ r प्लस 1 टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ 2 प्लस 3x की पावर, वैसे तो फिर हजारों इसके काम करेगी तो अपने को कुछ ना कुछ डेफिनेशन तो लेनी पड़ेगी, इफ r प्लस 1 term in the expansion of this thing, so NCR wala is the greatest where x is equal to 1 upon 6, then a is right, so once again क्या करते थे अपन, oh god मैं भूल गया वो क्या करते थे, this one term is the greatest, oh god यार अपन ने किया था, मैं भूल कैसे सकता हूँ, what was the thing, what was the thing, mod of x upon a minus 1 नीचे रहता था, ऊपर n minus 1, right, so your capital A would be n minus 1 upon mod of x upon a minus 1, right, और फिर ये सब ढूंढने के बाद में you would do r is less than or equal to
a and bigger than or equal to a minus 1, right? I think so. I think that was correct. Yeah. Okay. X 1 upon 6 whatever. In this case, x upon a क्या है? Sorry, x upon क्या b if it's small है जो भी है. So इसका mod चाहिए अपने को वैसे भी. So 2 plus 3 times of 1 upon, okay, it's like 2 plus 1 upon 2 basically, right? Okay, so uh, right, it's like a plus x or x plus a. ये अजीब हो रहा है, राइट? सो अपने को फ्रॉम बेसिक्स करना पड़ेगा इसको. सो वन सेकेंड मैं बस थोड़ा सा डेरिवेशन कर रहा हूँ. a प्लस एक्स की पावर n जो है इसमें अपने को ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढनी है. सपोज ग्रेटेस्ट टर्म NCR वाली है. So NCR and then yeah, because a power n minus r x power r, this thing must be bigger than NCR plus 1 a power हाँ बस इससे थोड़ा सा बड़ा. and you get the idea, right? मैं इसको हटा ही देता हूँ इनफैक्ट. राइट, सो इसमें तुमने एक बार x को बढ़ा दिया और एक को एक बार तुमने कम किया, राइट? सो लाइक x अपॉन a, and this is actually also bigger than NCR minus 1 and a upon x, right? अब अपन दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग ट्रीट करेंगे. फिगर देन और इक्वल टू हो सकता है इनफैक्ट, व्हाटएवर. ये इनइक्वालिटी का क्या होगा? a अपॉन r इज इक्वल टू, सो NCR अपॉन NCR minus 1 इज लाइक, so n minus छोटा नंबर which is r minus 1 upon upon बड़ा नंबर, right? Yeah, I think that's right. That's what we used to do. So NCR plus 1 upon NCR, उसका यही था ना? Yes. Yeah. जो भी है. Right. I mean, of course. What else? So NCR यानी कि ऊपर R रहने वाले और R plus 1 में क्या होगा? ऊपर R रहने वाले. So R plus 1 है, like n times n minus 1 चलते जाओ R plus 1 टर्म्स के लिए. तुम स्टार्ट 0 से कर रहे हो, इन दी एंड तुम कहाँ पे एंड करोगे? R, so n minus R, और फिर नीचे ऐसे R टर्म्स रहेंगे और बाय द वे अपॉन R plus 1 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा R plus 1 आएगा और फिर R फैक्टोरियल आएगा अपॉन ये सारी चीज n times n minus 1 चलते जाओ बट टिल n minus R plus 1 ओनली, और ये सारी चीज अपॉन जस्ट R फैक्टोरियल, तो कैंसिल होता है. एंड देन इन दी एंड जस्ट गेट दिस थिंग n minus R upon R plus 1, इसलिए n minus छोटा अपॉन बड़ा. सो ये ऐसा हो जाएगा, राइट? ओके, so it will be a upon x, right? Not equal to, less than or equal to, right? Yeah, so a upon x is less than or equal to, और बाद में मैं a और x दोनों पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूँ, whatever. So n plus 1 minus r upon r, right? Yeah, which means okay, n plus 1 upon r is still bigger than or equal to, इसको उधर भेज दो, a upon x minus, sorry, plus 1, right? Yeah. Okay, I think that makes sense, right? And similarly, so यहाँ पे 1 माइनस नहीं आएगा, पे प्लस 1 आएगा, तो वॉट एवर. और जो दूसरा वाला था, सेम चीज़ अपने को करनी है, विच इज a अपॉन x इज एक्चुअली बिगर देन और इक्वल टू, सो इसको उधर भेज दिया, इसलिए वैसा हो गया, राइट? दैट्स बिगर देन और इक्वल टू, प्रीटी मच द सेम स्टफ, एक्सेप्ट कि यहाँ पे नीचे r plus 1 आएगा और ऊपर आएगा n minus r, right? Yeah, so which is just, यहाँ पे minus and plus 1 कर दो, like n plus 1 upon r plus 1 minus 1. So a upon x plus 1 has to be bigger than or equal to n plus 1 upon r plus 1. So, right. What does that mean? N plus 1 upon a upon x plus 1 is bigger than or equal to r, but then r plus 1 is bigger than or equal to n plus 1 upon r. ये सारी this चीज, right? So this is how it's going to be. It's bigger than or equal to r plus 1. Yeah, that's how it is going to be. हाँ, तो ये चीज थी in fact. Right, let's apply this to this problem. So अभी क्या है अपने पास में? r plus 1 पता नहीं. अच्छा, ये चीज क्या हो जाएगी? So n plus 1 कितना? 26 upon a upon x, right? So पहले a है फिर x है, right? Yes. Yes, yes, yes. पहले a है फिर x है. हाँ, या ओके, तो ये वाली चीज a रहेगी और x मतलब ये वाली चीज रहेगी, which is going to be 3x upon, so
2/3x, right? 2/3x will be the thing. और ये 1/6 that's like it's just 1/2, so 4 आ जाएगा नीचे, right? Yeah, I think so. Of course, so just 26/20, 26/5, which is 5 and 1/5, right? Okay. So ये चीज छोटी है 6 से और बड़ी है 5 से, राइट? सो 5 and 6, ये वाला जो r की टर्म्स रहेगी, सो बेसिकली 6th टर्म एंड 7th टर्म, दोज विल द ग्रेटेस्ट, राइट? या सो r कैन बी 5 और 6 अपन ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. अब एक्चुअल में से बड़ा कौन सा रहेगा वो अपने को देखना है, राइट? हाँ, राइट. नहीं, सॉरी. Right, it's like, okay, एक ही टर्म मिल रही है, which is r equal to 5. What was the thinking? Of course, it's just going to be 5. दो नहीं, r plus 1 6 है, yes, but r तो 5 है ना, right? So c का आंसर p हो जाएगा. Next, 42. सॉरी, अच्छा d तो है ही ना, d करना पड़ेगा. Remainder when 2 power 62 is divided by 7. So 7 का टोशन क्या होता है? 6. यहाँ पे जितने 6 है, ठीक है ना, तो 2 power 60 हटा दो, जस्ट 2 power 2 मतलब कि 4, तो 4 है रिमाइंडर. टी का आंसर ऐसा जाएगा 42. इफ द फंक्शन चाहिए इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल. यार मेरे माउस को क्या हो रहा है, ये काम क्यों नहीं करता है अच्छी तरह से? सरफेस सही नहीं है क्या जिसको चला रहा हूँ? whatever. If the function y is equal to e power 4x plus 2 e power negative x is the solution of this differential equation, right? Okay, तो ये क्या है? y ट्रिपल डैश. oh wow. हाँ, डबल डैश भी मैं समझ सकता हूँ, बट ट्रिपल डैश आई हैव नेवर सीन दिस. सो y ट्रिपल डैश. अच्छा नहीं, तो अपने को सिर्फ इसको इसमें पुट करना है एंड देन यू हैव टू फिगर आउट के. इतना बुरा भी नहीं है. सो y ट्रिपल डैश विल जस्ट बी, इसका 3 बार अपने को डेरिवेटिव लेना है. ओके, 4 64 हो जाएगा, 64 e पावर 4x, 3 बार नेगेटिव 1 आया, सो नेगेटिव 2 e पावर नेगेटिव x. and just pair with it. Y dash is equal to 4 e power 4x minus 2 e power negative x, right? So what we want is minus 13 times that. यहाँ पे कर डालो. 13 times 4 कितना होता है? 4 12 is just 52, right? So 13 y dash is just 52 e power 4x minus 26 e power negative x, right? Yes. Hopefully कुछ अच्छा हो जाए. And then you have to do that. हाँ, subtract करो इसको, ठीक है? So this will be 12 e power 4x. Then you have to subtract with just 24 e power negative x, which is basically like 12 times of y, right? Each is y. So k must be 12. तो a का आंसर, अच्छा k/3 चाहिए अपने को, तो वो 4 होगा. So a का आंसर q, right? Next. B करते हैं. Number of straight lines which satisfy this differential equation. Straight lines, huh? So dy upon dx plus, look, straight line है तो फिर y डबल डैश तो 0 हो जाएगा. oh अच्छा नहीं, इसका स्क्वायर है, y डैश का स्क्वायर है. अच्छा, it's like basically m plus xm square minus y is equal to 0. but that's like y is equal to m square x minus m. but अपने को पता है कि एक्चुअली में ये चीज़ m होनी चाहिए, तो फिर m is equal to m square. So m can be, पर ऐसे तो इन्फिनिट हो जाएगा ना, लेकिन क्योंकि नो नहीं, इन्फिनिट नहीं होगा, यही तो पर्टिकुलर. हाँ ठीक है, तो m मिल गया तो अपने को स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी अपने आप. सो m कैन बी 0 और m कैन बी 1. सो सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइन्स है ऐसे. सो b का आंसर r. नेक्स्ट c करते हैं. If the real value of m for which substitution y is equal to u power m will transform the differential equation into a homogeneous equation, then the value of 2m is. अच्छा, so u power m से ये चीज डिफरेंशियल के होमोजेनियस हो जाएगी. Weird. ठीक है, ट्राई करते हैं क्या जा रहा है. I'm guessing कि I don't know. What about m equal to 4? If m equal to 4, then यहाँ पे क्या u की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे u की पावर 16 आएगा. It's not nice. You don't want that. और यहाँ पे x power 6 है. Yeah, not good. It's not good. Got to think about it.
अच्छा यहाँ पे क्या एम यू पावर एम माइनस वन और यू डैश भी आएगा ना। सो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एम और एम माइनस वन, सो टू एम माइनस वन। यस, so 2m minus 1 plus 4, that's going to be 2m plus 3, and that's equal to यहाँ पे डिग्री क्या है 6, right? So of course m should just be 3 upon 2. Oh, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 upon 2 power 4 which is 6 as well, ठीक है, तो फिर वो सही है। So really I mean u is just 3 upon, sorry, m is just 3 upon 2, so value of 2m is 3, right? So c का आंसर p, अपन को सॉल्व भी नहीं करना है, बस you know wanna make this homogeneous, d करते हैं। Solution of differential equation is, oh look, ये क्या है, तो बहुत अच्छा दे दिया, right? I mean ये नहीं, उतना भी अच्छा नहीं है unfortunately, shit, not nice. So y in terms of x अपने को represent करना है, hey wait, x square का derivative 2x होता है, अपन वो चीज, oh so it's like the derivative of you know x square times dy upon dx, that is equal to 12y. Interesting. Okay. And you're saying y equal to ax power m plus bx power negative n is the solution of this thing. Huh. Well, I mean, just keep going with it. Maybe कुछ stuff अच्छा मिल जाए इसमें से, right? Okay, okay, think about it. X square dy upon x अपन कुछ नहीं, it won't be nice. That doesn't work like that. Right? Better not think of it like this. यहाँ पे 2 upon x आ सकता है. बट तुम बोल रहे हो कि कोई भी टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि सेटिस्फाई करता है, दैट्स क्रेजी। वेट, हाउ डज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाई दिस थिंग? यहाँ पे कहीं एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ वाई है, दैट्स प्रॉब्लमैटिक। अगर यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट्स होते वी वुड हैव डन दिस, बट इट्स नॉट जस्ट कांस्टेंट्स। What about try to factorize this? So by 12y, right? X square y double dash plus, I mean I know कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो चीज़ है वो अपने को तभी करनी चाहिए तभी कांस्टेंट्स हो, पर अपन ट्राई करेंगे वैसे भी, who knows, maybe वो काम कर जाए। So I will just try to factorize this. Wait, isn't this like homogeneous or something? Yeah, मतलब, so why don't we just put y equal to kx, right? K constant नहीं है, k is a function of x, or y equal to ux or something. Maybe that will work. So it's like x square, or if अपन ट्राई कर सकते हैं इसको you know factorize वगैरह करने का, so for that you will have to take this x square y double dash plus x y dash plus, yeah okay, in the end it's not nice, अपने कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है इसको कैसे, right? Just do it this way, y is equal to ux, इसको सपोर्ट किया, so x square times इसका डेरिवेटिव which is u plus x u dash, उसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना अपने को, ओके, सो एक्स स्क्वायर टाइम्स यू डैश प्लस यू डैश, ओके, प्लस एक्स यू डबल डैश, हाँ वियर्ड, सो 2x स्क्वायर यू डैश प्लस एक्स क्यूब यू डबल डैश, ये तो बहुत खराब हो रहा है, तो पहले से भी खराब है, but they should have given us something nice, not like this. तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, come on, why is this not working? Isn't u dash just, the u is a unitless quantity, you can think of it like that, so okay, then it's making sense कि ठीक है ये, okay fine, whatever, we'll deal with it, and then plus 2xy dash, so 2x times ये सारी चीज which is 2x u plus you know 2x square u dash and minus 12y which is just minus 12 ux is equal to 0. कुछ अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें, ये बहुत ही घटिया सा है, it's like x square u double dash और हाँ not nice, यहाँ पे 2 है, so 4x square u dash, but in the end it's just going to be like 4x u dash.
-10 यू ओके जो जो 0 to 0। हाँ ये उतना ही खराब है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ इसमें, ये तो ऑलमोस्ट इसको सॉल्व करने जैसा ही हो गया ना। ओके सो क्या बस इसको इसमें पुट कर दो एंड गेट द वैल्यू ऑफ द थिंग्स? नहीं, वी वांट टू सॉल्व इट करेक्टली। हाउ डू वी डू दैट? सॉल्व इट करेक्टली कंप्लीटली वाइड ऐसे तो अपन कुछ तो भी कर पाते इजीली, मतलब या फिर सिर्फ कांस्टेंट्स होते हैं, ऐसा कुछ होता तो, बट नहीं ये कुछ अलग ही है। लेट्स थिंक ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ y। अगर मैं वैसा देखता हूँ then you know y double dash which is just a you know d upon dx of so basically क्या dx upon dy यानी कि x dash की पावर 1 upon -1 right, अपने को इसमें लेट करना, so it's like यहाँ पे dx, okay so dx upon dy which is just x dash, sorry ये यहाँ पे x चाहिए ना, so it should be dy upon x which is okay x power so x dash की power -1 and then the derivative of is okay this will be -1 upon x dash square और फिर यहाँ पे x double dash आएगा right yeah which is just -1 upon x dash cube and then x double dash उसे अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, so it's gonna be और ये चीज times x square so x square upon you know x dash cubed x double dash यहाँ सब नेगेटिव में प्लस ये चीज which is just 2x upon x dash minus 12y is equal to 0, so x is a function of y basically. Does this help? लग तो नहीं रहा है कि कुछ हेल्प करेगा। It's like minus x square x double dash plus this is not good at all। इसको उधर भेज दो x dash squared and then okay 2 और फिर x and then minus 12y x dash cube is equal to 0। Nope, not helping at all, not gonna be doable। कोई और कुछ भी और तरीका हो मुझे बताओ ना यार, क्या कर सकता हूँ मैं? डेरिवेटिव ऑफ अपन ऑलरेडी वो ट्राई कर चुके हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर y डैश एंड दैट्स इक्वल टू 12y, बट इसके आगे क्या, इसके आगे वी डोंट नो। ऑन थिंक अगर y डैश वगैरह यहाँ पे होता तो अपन कर पाते राइट, बट नहीं तो नहीं है। जस्ट ऑफुल। अगर यहाँ पे y डैश इंस्टॉल करूँ सो एंड देन फिर डिवाइड, नहीं काम नहीं करेगा, जस्ट नो दैट। तो इसको करने का तरीका है कि नहीं है? डजंट लुक लाइक इट, शायद से नहीं है एक्चुअली इसको करने का तरीका। हाउ वुड वी फिगर आउट कि यू नो इसका सोल्यूशन क्या रहने वाला है? ठीक है पॉलिनोमियल सॉल्यूशंस कुछ है, बट एक्चुअल सॉल्यूशंस लाइक क्या हो सकते हैं अगर अपन y को पॉलिनोमियल ना ट्रीट करें एंड यू नो डू इट द करेक्ट वे? कुछ नहीं कर पा रहे अपन तो। चल डिवाइड करो x स्क्वायर से, क्या पता कुछ हो जाए। y डबल डैश प्लस 2 अपॉन x एंड देन y डैश माइनस यू नो 12 अपॉन x स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 0, और फिर वापस अपन फैक्टराइज वगैरह करने का ट्राई कर सकते हैं सच दैट अपन ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं हज़ार बार। सो 12 माइनस 12 बेसिकली इट्स लाइक 4 and 3, नहीं काम नहीं करता है। और कुछ नहीं, 6 and 2 कुछ भी काम नहीं करता है, तो दिख रहा है अपने को। समथिंग एल्स 2q स्पेसिफिकली 2q आखिर इट्स लाइक 1 अपॉन x है देन माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर आगे चला से यहाँ पे y था सॉरी। नो इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट ये इसमें इनपुट करना पड़ेगा बिकॉज ठीक है क्या जाता है कभी भी करना पड़ता है, सो जस्ट पुट दैट इन हियर। ठीक है फिर x स्क्वायर टाइम्स y डबल डैश, तो y डबल डैश क्या है m टाइम्स m माइनस 1, इसको वैसे लिखो ना डेरिवेटिव ऑफ यू नो x स्क्वायर टाइम्स y डैश, अपन ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज आई थिंक दैट्स बेटर टू राइट। सो आई मीन कैलकुलेशन वाइज भी शायद से इसके एक्चुअल में यानी बहुत सारे अलग अलग सोल्यूशन होते होंगे और फिर अपन सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी देख रहे हैं, सो इसलिए
Yeah, maybe. I don't know. Okay, so right, इसको क्या हो रहा है माउस को मेरा. ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. लाइक y dash is just m a x power m plus 1 plus negative है क्या. ओके, negative n p x power negative n. ओके कूल. So x square times that वो क्या हो जाएगा. That will just be m a x power m plus 1 minus n b x power oh yeah, by the way यहाँ पे negative 1 आने वाला है. So हाँ, so negative n plus 1 right. Yeah, तो फिर अपने को इसका एक और डेरिवेटिव देना है. लाइक उसका डेरिवेटिव क्या होगा. m times m plus 1 फिर a x power m just like that. Okay, फिर इसका डेरिवेटिव which will include plus n times n minus 1 फिर b and then x power negative n, and this must be equal to that because okay 12 times of that actually. So that's like saying m times of m plus 1 is equal to 12. Guess, basically guess कर रहा हूँ मैं. And then n times of n minus 1 is equal to 12 as well. Right. So क्या हो सकता है. 3 and 4 चल जाएगा. m equal to 3 and yeah, that will work. And what about n? So n equal to 4 चल जाएगा, right? So 3 and 4. So what you're saying is कि a x power 4 plus b x power negative, sorry, a x power 3 plus b x power negative 4 is a solution to this thing, right? Okay, but why? Why is that a solution? I don't know. ये सही क्यों नहीं है. ऐसे तो अपना कभी खत्म ही नहीं होगा ये सब. Why is this a solution? Why not something else? Whatever, अपने को आंसर मिल गया. That's enough. So just 7 is the answer, which will be S. But seriously, doubtful नहीं है थोड़ा सा. मतलब सॉल्व कैसे करोगे तुम इसको. थिंक मुझे थोड़ा और देखना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं इन जनरल, बट इट्स लिमिटेड टू जे सिलेबस बिकॉज मोस्ट लाइकली कहीं और से पूछ रहा है. मैंने कभी इस टाइप कुछ देखा नहीं है. ठीक है, मैंने सेकेंड डिग्री देखी जिसमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हो, बट ये चीज नो आइडिया. नेक्स्ट, क्या हो रहा है मेरे माइक को. माइक नहीं, क्या माउस. हट यार ये. वेट अ सेकंड. वेट, थोड़ा सा वेट करो बस. ओह, ये तो बंद ही हो गया. हाँ, अभी लाइक इसकी बैटरी जो भी है. डज दिस वर्क नाउ. स्टिल उतना ही बुरा है. ठीक है, माउस नहीं यूज करते थे, इसको यूज करना पड़ेगा. पर ऐसे तो अपना होगा ही नहीं. ओके ठीक है, फिर आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अपने को क्या ऐसे में डायरेक्टली नहीं स्क्रॉल. ठीक है, मैं एक्चुअली स्क्रॉल करने के लिए यूज करता हूँ जनरली. तो अब अचानक से नहीं, अभी भी इतना ही काम कर रहा है. वैसा ही है, उसका चेंज हुआ है. ठीक है, अपने को ऐसे डील करना पड़ेगा. इसका चेंज होने वाला है. 43, लेट्स डू इट. Let A, B, and C be 3 points where the 3 vectors are linearly independent, and R is a moving point in 3-dimensional coordinates. अच्छा, अपने को लोकस ढूंढने हैं. सो एक स्फीयर का, एक स्ट्रेट लाइन का, एक सर्कल का, एक प्लेन का. तो लोकस ऑफ P is R if sorry R minus A dot R minus B is equal to 0. A B C कोई भी मतलब 3 रैंडम वेक्टर्स है, राइट, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है 5. एंड P of R कोई भी एक टाइप का पॉइंट है. सो R minus A isn't that like R minus कोई तो भी एक पर्टिकुलर, राइट. सो एक पर्टिकुलर पॉइंट से वेक्टर और फिर दूसरे एक पर्टिकुलर पॉइंट से वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है. हाँ, ये अजीब है. सॉरी, थोड़ा सा इसका अलग केस देखते हैं. व्हाट इफ A 0 था, देन R वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट. इट्स लाइक सेइंग R स्क्वायर इज इक्वल टू R वेक्टर डॉट B वेक्टर.
dot b vector is just something. अच्छा, और आर वेक्टर बी वेक्टर एक पर्टिकुलर प्लेन में कन्फाइंड रहने वाले, मे बी बी वेक्टर ऐसा था कहीं कभी, राइट. आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर, हाँ, इट्स लाइक उसका तो मैं एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, सो लेट अस से बी वेक्टर एक पर्टिकुलर एक्सिस से अलोंग है, राइट. सो आर वेक्टर डॉट दैट थिंग, हाँ, राइट. मतलब इसका प्रोजेक्शन जो इस पे रहेगा, यस, दैट थिंग. Isn't that like the distance from this line? Yeah, okay, and that's equal to r square. R square is just the distance from this thing. So, oh, huh. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है और कह सकते हैं. ओके, ये अजीब है. I'm thinking this is some kind of a circle, right? ये सर्कल होना चाहिए बिकॉज ऐसे कितने पॉइंट्स है, सपोज अपन इस प्लेन में बात कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स है सच दैट दिस हैपेंस, राइट. मतलब एक पर्टिकुलर, राइट. सो लाइक ये क्या हो जाएगा, पी जो भी लेंथ होगी, पी की जो भी लेंथ होगी, दैट टाइम्स आर वेक्टर डॉट बी हैट. अगर मैं बी हैट की जगह जस्ट से मैं आई हैट यूज करूँ जस्ट फॉर टाइम बी, राइट. मतलब अपन जनरलाइज से अच्छा इनको रोटेट वगैरह करो ताकि अपन यूज कर पाए चीजें प्रॉपर्ली. सो दिस विल बी लाइक b times x squared, that's equal to x squared plus y squared, right? That's of course it's a circle, you know that, right? And b is of course just a length, so x squared minus bx आएगा यहाँ पे, is doable, it's doable, we know that. It's like 0, 0 से पास हो रहा है, at same time b, 0 से पास हो रहा है, which, right, that kind of circle, हाँ, circle clearly बन सकता है. So right, इस पर्टिकुलर प्लेन में ये एक सर्कल है, बट व्हाई इज दिस सर्कल आर स्क्वायर? ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग. हाँ, व्हाई इज दैट अ सर्कल? एंड इट्स सेंटर्ड अराउंड व्हाट? centered around 0, 0 and b, 0. So it's like this, ऐसा डायग्राम, राइट. इसमें जो भी पॉइंट्स रहेंगे इसका इससे डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, मतलब कि बेसिकली ये डिस्टेंस ये सेम है. नो, इट्स नॉट. अच्छा, मल्टीपल से चाहिए. क्यों ऐसा, क्यों? अगर ये एंगल कांस्टेंट होता है दैट वुड हैव मेड लॉट ऑफ सेंस, बट ये तो अजीब है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए. व्हाई इज इट स्टिल हैपनिंग देन? I don't know, this doesn't look good. मतलब ये जो रेशियो है इनका, right, that's a constant. But wait, is that a circle or what? No, distance का रेशियो नहीं, इसके स्क्वायर का. Okay, okay, ठीक है, अलजेब्रा में बिलीव करते हैं, let's not go for the geometry. ठीक है, तो ये एक सर्कल रहेगा in one plane of course. मतलब तुम्हारे पास में ये सर्कल क्रिएट हो गया है, इसमें सारे जो पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई करते हैं जो भी. बट द थिंग इज कि ओके, बी वेक्टर इज लाइक यहाँ पे कोई तो भी टाइप का वेक्टर है, ओके, एक्चुअल में ऐसा रहने वाला है. एंड द थिंग इज कि सिर्फ अपन इस प्लेन पे लिमिटेड थोड़ी ना, इसको तुम रोटेट करो ना अबाउट दिस एक्सिस एंड यू जस्ट गेट अ होल स्फीयर, या हॉलो स्फीयर, यस, बट इट्स अ स्फीयर एट लीस्ट. ओके, सो ए का आंसर पी होना चाहिए. व्हाट अबाउट बी? B is locus of points of so locus of points P, और by the way ABC fixed vectors है, yeah, right. Actually जो मैंने use किया वो B vector नहीं है, okay, that should have been like minus B vector plus A vector यहाँ पे होना चाहिए था, और R A को मैंने R dash बोलना चाहिए था, but whatever, you get the idea. Locus of P if C vector dot R vector cross B vector is equal to A vector dot B vector cross, मतलब कि जो volume है it's like, हाँ, that's weird. So CRB, ये जो वॉल्यूम है that's equal to ABC, ये वॉल्यूम. This is a constant, you can believe that, right? What about this guy? Right? So this can also be thought as, अच्छा मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ C को उधर भेज दिया, so RBC which is like R
dot b cross c. Yes. Yeah. So ये चीज एक कांस्टेंट रहने वाला है. We don't know. Wait, that's equal to just a cross a dot b cross c, right? Sorry, ये क्या हो रहा है? So b cross c is just some vector, right? Okay. कोई तो भी वेक्टर है. We don't care where it is. और a वेक्टर कोई भी a वेक्टर है, right? इसका जो डॉट प्रोडक्ट है इस पे आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस साथ में भी सेम ही है ऑल ऑफ द टाइम. सो राइट, आई मीन क्लियरली इट मस्ट बी ये फिर अपन इसको ऐसे देख सकते हैं. इट्स लाइक आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0. मतलब कि isn't that some kind of plane? Yeah, it's a plane basically. So a vector is a point on this plane, और ये जो पूरा plane रहेगा that will be this thing. So S is the answer. What about C? Locus of point P if 2R cross A plus A cross B is equal to C cross A. So look, C cross A minus A cross B, जो भी हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, just some kind of constant thing, and you are seeing 2 times of R cross A is equal to some constant, right? So wait, what? Seriously? R cross is a constant, तो कुछ और हो ही नहीं सकता. Cross product is like a vector, so this is weird. Yeah, this is, what is this? So a vector कहीं तो भी तो है ऐसा. Okay, it's some kind of it's like this R minus R naught cross a vector is some kind of actually this is 0, right? That's what you're saying. But what does that mean? That these are actually just collinear. So R is equal to R naught vector, sorry, plus some multiple times a vector. Isn't that right? So this is just a line basically. Yeah. So C का locus, it's a straight line which is Q. D करते हैं. Locus of P if R minus A का square is equal to B square and R minus A dot B is equal to 0. R minus A का square is equal to B square क्या होता है? And R minus, so it's just shifted basically at A. तो A equal to 0 put कर दो just for So like R square is equal to B square, यानी कि magnitude of R is some kind of constant, right? अच्छा, that's a sphere about the center origin. Actually में about a vector point, but whatever. And R vector dot E vector is equal to 0. So it's perpendicular to that vector. Length is the same and it's a circle. It's just basically a circle, right? So जो B vector है, that's the perpendicular axis of the circle, or A vector is the center of the circle, and then R vector are all of these points, right? तो ये तो समझ गया. So D का answer is R. अच्छा, next 44. Equation of a tangent to this thing from 6, 0 is, seriously, so a tangent. Oh god, ये सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पता नहीं क्यों जो पूछ रहे हैं. ठीक है, करो. क्या है ये? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस फ्रॉम दैट. वाओ, ठीक है. y is equal to mx plus minus square root of a square m square is just 18m square plus b square, which is क्या ना 8. या y कितना है? 0 है. m कितना है? 6 है. 6m का mod, ठीक है, is equal to square root of 18m square plus 8. ओके, स्क्वायर का डालते 36 आएगा यहाँ पे. 2 हटा दो, जस्ट 18m square is equal to यहाँ से 2 हटाने पे 9m square plus 4 बचेगा सिर्फ, राइट? So that's like 9m square is equal to 4, which means m is equal to plus minus 2/3. So 2 tangents अपने को मिल गए, and you want just one of the tangents. इसमें हर जगह पे x plus y some, so like हर जगह पे स्लोप जो है वो नेगेटिव है, so अपने को नेगेटिव 2/3 लगेगा. There we go. So y is equal to negative 2/3 x, मतलब इसका प्रिंसिपल टाइप चीज रही. Okay, so it's like 3, 5 plus 2x is equal to some kind of constant, and it's passing through. So ये जो tangent है, it passes through 6, 0. So वो चीज यहाँ पे पुट करने पे मिलता है 2x plus 3y is equal to 12, which is R. So A का आंसर R.
go to B. Equation of chord of this thing whose midpoint is this. अच्छा अच्छा, इधर से एक ellipse है ना, right? Midpoint is this thing, huh? So origin से midpoint तक क्या है? Slope अपना 2/3, right? So जो yeah right, मतलब and of course it's just squished and everything. वही तो है, circle रहेगा तो midpoint, so origin to midpoint जो चीज रहती है, that's the perpendicular, but यहाँ पे squished है सब कुछ, right? So in this particular case m1 m2 is equal to like a square, so yeah, just negative b squared upon a squared, right? Yeah, of course I remember that. Sure, that was the thing, that must be the thing. So for a circle this would be -1. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे okay, तो m1 अपने को already पता है, it's just going to be कितना 2/3. So m2 is going to be negative b square upon a square times 3 upon 2, or b square a square है like just 12 and 16 over there, which is right. So negative ये तो गया, ये तो वैसे भी चला जाएगा, so just gonna be 3 और ये जाएगा 4. not nice, not nice. 12 upon 13 वही तो था, लेकिन और क्या है, right? Okay, cool. So just 9 upon 8, right? So y upon x is equal to 9. हाँ ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये 8y plus 9x is equal to some kind of constant, और 3 comma 2 से बैठता है, so 16 plus 27. So 9x plus 8y is equal to 43, which is option P. Next, equation of chord of contact of the tangents drawn from this to the ellipse. अच्छा, chord of contact drawn from the tangent. अच्छा, ये तो घटिया सा क्वेश्चन है, ये तो इजी होगा. It's like 1/6x plus y upon 4 is equal to 1. So deal, just multiply by 24 नहीं, 12. So 2x plus 3y is equal to 12, which is also just r. Okay, next B करते हैं. Equation of common tangent to this thing and that thing. अच्छा, इसका और इसका common tangent लिख लेते हैं. Seriously, ठीक है, इसका common tangent कैसा रहेगा? Like y is equal to mx plus minus square root of a square m square 6m squared plus 10, और इसका रहेगा y is equal to mx plus or minus square root of, यहाँ पे नीचे 8 आ रहा है ना, so whatever, 8m square plus 8. You can see clearly these must be the same. So what does that mean? That means 2m square is equal to 2. So right, m must be so m square must be 1, so m can be plus or minus 1. So x plus y, अच्छा -1 ले लेते हैं because इसमें प्लस अंदर दिया ही नहीं है, so -1 पुट कर दो. y plus x is equal to plus minus square root of 16, which is plus minus 4. इस केस में सिर्फ अपने को plus 4 दिया है, so Q is the answer. Next question, 45th. The x coordinate of points on the axis of the parabola from which all 3 normals to the parabola are real. Point on axis of this parabola. अच्छा, ये तो गंदा वाला दे दिया. नहीं, ओके, इतना भी गंदा नहीं कर सकते इसको. From which all the 3 normals to the parabola are real. What do you mean by that? ऐसा बोलो ना कि 3 distinct normals है, ये क्या बोल रहे हैं real? Whatever. So y minus क्या है ये चीज, 1 का स्क्वायर is equal to 4x minus 5 और प्लस 1 तो लगेगा अपने को, so this will just be 4x minus 4, यानी कि 4 times of x minus 1. So for suppose अपने पास में जो point है, this is like h comma k, right? Then क्योंकि ये centered around 1,1 है, so according to 1,1 इसकी coordinates हो जाएगी h minus 1 comma k minus 1. So h minus 1 must be bigger than 2a, right, for 3 normals. So 2a is just 2, so h must be bigger than 3, so at least भी नहीं, 3 से बड़ा ही चाहिए. So इस तो बहुत सारे इसमें unexpected.
बट ऐसे तो या राइट मतलब बहुत सारे हो जाएगा इस टाइप से। सो 3 के अलावा सब कुछ चल जाएगा, लाइक 5 6 8 सब कुछ चलेगा। राइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्यू आर एस अपन तीनों का डालेंगे इसमें। सो ए का क्यू आर एस, बी का करते हैं। Shortest distance between the parabola this and that is y is equal to 4x and y is equal to 2x minus 6. Shortest distance you say. Right, so इसका पैरामीटर क्या रहेगा पहले वाले का? इसका रहेगा a is just once like t square t1 बोल दे। एक काम करो, पैरामीटर पर t1 t2 से अच्छा कुछ और यूज कर लेते ना। अल्फा स्क्वायर कमा, सो और क्या रहता है 280, सो just 2t in this case because a is 1, so 2 अल्फा। और दूसरे का रहेगा so y is equal to 2 times of x minus क्या है ये x minus क्या है ये y is equal to 2 times of x minus 3, right? So 3 plus something okay but 1 upon 2 अरे कर तो सकते हैं, that's I don't want to like that, जो भी है। so right, x के लिए हो जाएगा 3 plus so 80 square a तो 1 upon 2 is like 1 upon 2 beta square or something, और इसके लिए रहेगा just beta like that, right? So yeah, and next what we want is कि अपने को इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। पहले तो क्या लाइक इसका स्क्वायर क्या रहेगा डिस्टेंस का? that will just be 3 minus alpha square plus half beta square का स्क्वायर, और फिर प्लस यार ये सब कुछ 2 है। एक काम करो, बीटा को रिप्लेस कर दो 2 बीटा से, then this will just be 3 plus 2 beta square comma 2 beta, right? तो ये या जान दो इसको। तो अपने को बस इनके बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है, which is like इसका स्क्वायर कितना होता है 3 plus 2 beta square minus alpha square, nothing squared, and then plus 4 times of beta minus alpha का स्क्वायर पूरा स्क्वायर। सो अपने को क्या अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है। फॉर दैट जस्ट टेक द पार्शियल डेरिवेटिव टू अल्फा पहले ले से। सो जस्ट हैव 2 टाइम्स ऑफ ये सारी दिस चीज, वो तो 2 तो वैसे ही कटने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 3 plus 2 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और फिर यहाँ पे इसका डेट आएगा -2 अल्फा, राइट, -2 अल्फा, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यस। और ये सब क्या हो जाएगा, वो 2 तो कटने वाला है, जस्ट 4 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस अल्फा equal to 0, right? That's what we want. So from that you can say कि 3 plus 2 beta square minus alpha square, all of that times alpha is equal to, इधर पेश दिया अपन ने नेगेटिव हो गया जो भी है, so -2 times, अरे फिर +2 यहाँ पे कर सकते हैं डायरेक्टली, नो बिग डील, +2 times of beta minus alpha that has to be equal to 0, right? सिमिलर चीज अपन बीटा के लिए भी कर सकते हैं, राइट? so मैं इसका डेरिवेटिव ले लूंगा 3 plus 2 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वगैरह मिलेगा मुझे, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा मिलेगा, यहाँ पे मुझे +1 मिलेगा, ओके 4 तो मुझे वैसे मिलने वाला है, मुझे +1 मिल जाएगा, एंड देन यहाँ पे, और वो 2 तो मैं भी काट रहा हूँ, उसका टेंशन मत लो। और यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा 4 बीटा इज द थिंग, सो ये 4 तो गया अपने आप, जस्ट बीटा टाइम्स ये सारी चीज इक्वल टू 0। सो इसको उधर वेट से कि अपन इसका रेशियो ले सकते हैं, लाइक अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू -2, देयर वी गो, अल्फा इज जस्ट -2 बीटा, पुट कर दो इसको इसमें कोई भी एक चीज में, जस्ट से इसमें पुट करते हैं बिकॉज़ ये सिंपलर दिख रहा है मुझे। सो बीटा टाइम्स 3 plus 2 बीटा मींस अल्फा स्क्वायर इज लाइक +4 बीटा स्क्वायर क्यूबिक, ओह गॉड नॉट नाइस, ऐसे भी क्यूबिक आने वाला था सो नो बिग डील, 4 बीटा क्यूब प्लस 2 beta square, oh and by the way alpha is just 2 beta, so ये चीज हो जाएगी 3 beta right there। oh so we can actually not do cubic, so beta equal to 0 तो एक चीज रहने वाली है, right? yeah, so either beta equal to 0 which would mean कि अपन एक्सिस की बात कर रहे हैं, that is the common tangent, sorry common normal, yeah, otherwise क्या क्या हो रहा है, otherwise you just have 4 बीटा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, तो प्लस 2 बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दैट, राइट? या
अनसॉल्वेबल नहीं है राइट, बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 1 माइनस 4 टाइम्स ठीक है 8 और 24 आई थिंक विच इज नेगेटिव है, सो भूल जाओ इसके बारे में, ये सॉल्वेबल नहीं होगा. सो द ओनली थिंग इज बीटा इक्वल टू 0, दैट इज इन फैक्ट द थिंग. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी बिटवीन द वर्टेक्सेस राइट. सो इसकी वर्टेक्स है 0,0, इसका है 0,3, सो 3 शुड बी द डिस्टेंस आई थिंक सो राइट. या फिर शायद इसका कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है. या दैट्स द अदर थिंग दैट कैन हैपन, इसका कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं इनफैक्ट. हाँ okay okay, let's try out some other numbers. अच्छा तो जो 3 है that's supposedly the minimum distance. कोई और नंबर ट्राई कर सकते हैं अपन, पर इतना सोच ही रहे अपने को पता है ना कि इन दी एंड ये चीज एक इन्फिनिटी पे जा रही है, ये चीज दूसरे इन्फिनिटी पे जा रही है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहने वाला है इन्फिनिटी पे जाने वाला है. सो इट मस्ट बी जस्ट यू नो ऑलवेज बिगर देन दैट. या कि शायद से लोकल मैक्सिमा है, क्या पता अपने को. y square equal to 4x is like this, y square equal to 2x minus 6 is like यहाँ पे 3 है और right. So yeah, I think it's reasonable to say कि ये shortest distance रहने वाला है right. So there we go, 3 is the thing. So इसमें मुझे यार proper analysis बार करनी पड़ेगी. Anyway, so B का आंसर P. Next C करते हैं. Two perpendicular tangents PB are drawn to this. Minimum length of AB is. Seriously. Focal chord है, minimum length चाहिए focal chord की. क्या कर दिया ये? We know it's just the latest rectum, which is 8. So इसका आंसर S रहेगा, C का आंसर S. D का क्या? इसमें क्यों आ रहे अचानक से सारे के सारे किससे, यानी थोड़ा सा whatever. Next is the number of points with integer coordinates that lie in the interior of the region common to the circle. What is this? X square plus y square to 16 and the parabola. अच्छा ठीक है. Integer coordinate. So we know x square plus y square must be less than or equal to 16, right? अच्छा अगर exactly उसके ऊपर में रहे तो क्या उसको अपने को काउंट करना है कि नहीं करना है? I think नहीं करना है. They exactly said that interior, so it cannot be in the boundary. So x square plus y square is less than 16. At the same तो इसका मतलब है कि दोनों जो है वो 4 पे रहेगा at max. या at max क्या होगा ही नहीं, इनफैक्ट 4 तक तुम जा ही नहीं सकते हो, 3 तक रुक जाओगे राइट. सो 9 प्लस 4 चल जाएगा बट ओके. सो ठीक है. और दूसरा क्या है, y square minus 4x is less than 0. Basically y square is less than 4x. हाँ okay. So I mean okay, ये तो obvious है. लोग अगर x अच्छा ठीक है, अगर x 0 है then it's not doable. Otherwise it's okay. अगर x 1 है 2 है 3 है, ये इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा फिर 4. सो उससे तो वैसे भी अपने को छोटा चाहिए ही है, वो अगर रहेगा तो इट वोंट वर्क. क्या फिर ठीक है ना, कर सकते हैं अपन इसको. और वैसे भी ओके. सो इसमें अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव वैल्यूज भी काम कर सकती है, पर एनीवे वाई स्क्वायर तो अपने को पॉजिटिव लग नहीं पा रहा है इसलिए. और ये ऑफ कोर्स नेगेटिव वैल्यूज अच्छा एक्स के लिए काम नहीं करेगी बिकॉज दिस मस्ट हैपन. एक्स पॉजिटिव है, वाई कैन बी नेगेटिव एज वेल. सो अपन पहले पॉजिटिव वैल्यूज का देख लेते हैं. सपोज एक्स 0 है, कोई वैल्यू नहीं चलती है. सपोज एक्स 1 है, देन वाई क्या क्या हो सकता है 1 2 3 राइट. सो वाई 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना इनफैक्ट. नहीं 1,0 एक्चुअली में हाँ चल सकता है, ऐसा भी नहीं है कि चल जाएगा इनफैक्ट. ओके 0 हो सकता है 1 प्रॉपर इस टाइप से करता हूँ x और यहाँ पे y. अगर x 1 है then y can be 0 1 2 and also like negative. So 0 यार क्या होगा ये 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 right. 4 नहीं चलेगा. What if y cannot be 0, sorry x cannot be 0. What if x is 2, then यहाँ पे 8 आ जाएगा. ओके सॉरी ये नहीं चलेगा इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली. ओह ओके, मुझे पहले लग रहा था कि ये एक्चुअली y लेस देन 4 है. नहीं, इट्स y स्क्वायर लेस देन 4 राइट.
सो 2 भी नहीं चलेगा बिकॉज उसका स्क्वायर क्या 4 के इक्वल हो जाएगा, राइट? सो जस्ट 0 and plus minus 1, only those will work. Yeah. अच्छा, अगर 2 है so y equal to 0, of course it works. What about, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा ना, तो प्लस माइनस 1 तो काम करता है, प्लस माइनस 2 ही काम करता है ना, बिकॉज 4 एंड देन 9 नहीं काम करेगा अनफॉर्चुनेटली, 9 नहीं होता है. What about x equal to 3? Then of course y can be 0, it can be plus minus 1. और यहाँ पे बाय द वे 9 आ गया, सो लाइक हाँ, it cannot be 3 but it can be 2, so yeah. और फिर यहाँ पे प्लस माइनस 2 आएगा बिकॉज राइट 12, 4 is still less than that, 3 नहीं चलेगा, राइट? सो देयर वी गो, दीज आर द ओनली सॉल्यूशंस. सो कितने आ गए इसमें ये 1 2 3 प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, सो प्लस 10, 13 solutions. What? But that's not in the options. ये थोड़ा सा अजीब है. हाँ, why is that the case? शायद से वो नेगेटिव सोल्यूशन को ले नहीं रहे. I mean, yeah, ये अजीब है. What is this? Seriously? क्यों नहीं ले रहे हो तुम? तो नेगेटिव पॉइंट्स को क्यों नहीं ले रहे हो? अच्छा, अगर इसको नहीं लेता हूँ नेगेटिव पॉइंट्स को, then it's 8. But we should take negative points, right? मैं उसका आंसर 13 बस दे रहा हूँ. 13 not in options. इसके पर हम ग्राफ करने का ट्राई करते हैं श्योरिटी. सो राइट, सो अपन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की देखिए कुछ करते हैं अपन. या सो लाइक 0,4 इज this, just go 1 2 3 4, I think somewhere over there. ठीक है, और यहाँ पे जगह 1 2 3 then 4 is somewhere over here. So पहला है 0, plus minus 1, or by the way y square equal to 4x is like this thing. So 0, plus minus 1. Wait a second. Sorry नहीं, 1, plus minus 1 है. हाँ राइट. सो ये चीज ऑलरेडी जब x equal to 1 रहेगा तो y equal to 2 पे आ जाएगी, राइट? सो इट्स गोना बी somewhere over here. अच्छा, मैं थोड़ा सा फिर ग्राफ अपने कलर करना पड़ेगा. ग्राफ इज लाइक, मैं फिर सिर्फ फर्स्ट पॉइंट का बना रहा हूँ, सो डायरेक्ट 2 पे जाने वाला है और फिर यहाँ पे डायरेक्टली 4 पे जाएगा. सो लाइक दिस एक्चुअली, राइट? ओके, सो जब यू नो whenever x is 1, y can be 0 और 1 और -1, -1 का नहीं दिख रहा है, तो एटलीस्ट 3 तो हो गए. फिर जब x 2 है देन it can be 0, it can be 1, it can be -1. या राइट, टिल नाउ कुछ इतना बुरा नहीं हो रहा है. सो अपना जो सर्कल रहेगा वो इस टाइप से रहने वाला है. ओके, कैन ऑल्सो बी प्लस माइनस 2, सो लाइक दिस, राइट? मतलब ये तो ऑलरेडी अपने पास में क्या 5 + 3, ओके ऑलरेडी 8 तो हो चुके हैं, इससे ज़्यादा भी रहने वाले, राइट? बिकॉज ये पॉइंट्स क्या ये भी तो रहेगा ना. सो या मतलब ऑलरेडी इसके ऊपर चला गया तो इसमें कोई है ही नहीं सोल्यूशन इनफैक्ट. ठीक है, फिर दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन 46. इसमें इतने सारे ऐसे बुरे क्वेश्चंस क्यों है आखिर, जो कि एक्चुअल में सही नहीं है? एंड आई डोंट नो. 46, f(x) इज, मुझे लगा 2 मिनट खत्म हो गया. खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज एटलीस्ट 60 तो भी क्वेश्चन है इसमें, राइट? 46 करते हैं. if f(x) is equal to x e power x squared and negative a squared x plus 2ax squared minus x cubed, so whenever x is less than or equal to 0, and this is when x is bigger than 0, is increasing in negative 1 to 1/3 the set of values of a is. अच्छा, so negative 1 to 1/3 में इंक्रीजिंग है, ठीक है. सो negative 1 to 0 में अपने को ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है. इसका डेरिवेटिव क्या वाला है भाई? तो अपने को ओह शिट, नेगेटिव में है. इसका डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा फिर अपने को. सो ठीक है, सो डेरिवेटिव क्या होगा? e पावर x स्क्वायर, दैट्स पॉजिटिव एनीवे, और प्लस 2x स्क्वायर e पावर x स्क्वायर. सो e पावर x स्क्वायर टाइम्स 1 + x 2x स्क्वायर. ओके, वो तो फिर पॉजिटिव है इन एनी केस.
So yeah, okay, 0 to 1 it's increasing. Sorry, a negative 1 to 0 it's increasing. No big deal. We just want it to be increasing in 0 to 1/3, right? And then you are good to go. Okay, so derivative क्या हो जाएगा? Minus a square plus 4ax and minus 3x square. So we just want this to be positive throughout, right? So throughout 0 to 1/3, which is basically like saying 3x square minus 4ax plus a square should be less than 0 throughout the thing. Yes, okay, obvious. Okay, 3x square minus 3ax. Isn't this like, okay, you know what? A minus 3x and then a minus x, right? That should do it. So basically 3x minus a times x minus a, that should be less than 0. So x should belong to, क्या कर रहा हूँ? So x has to belong to, so कब in fact ये negative होगा, that will happen when x belongs to a third to a, या फिर alternatively you also think negative हो, क्या पता. The thing is 0 to 1/3 should be contained in it, right? Of course a cannot be negative in that case because फिर तो ये पूरी पूरी range negative चली जाएगी, which makes no sense, right? And it should be containing 0, 1/3, right? So ये जो चीज है, oh god no, this is just really wrong. Oh god. Not nice यार. ये तो गड़बड़ हो रही है. क्या हो गया यहाँ पे? ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है ना. इसका डेरिवेटिव must be positive for x being 0 to 1/3, right? So 0 to 1/3 should definitely contain this range. Sorry, this range should contain 0 to 1/3, but it's not. It's not containing that range. That's a problem. क्या हो रहा है? Negative a square plus 4ax minus 3x square, that thing must be bigger than 0. So 3x square minus 4x plus 3 square must be less than 0. So मैंने factorize किया, which is 3x minus a times x minus a. So that should be less than 0. So for that to happen, x has to belong to a third comma a. तो ये हमेशा होना चाहिए 1/3 to 0 to 1/3 में throughout ऐसा होना चाहिए. But of course ऐसे कोई अपन कर ही नहीं सकते ना, ऐसे तो कोई range रहनी नहीं वाली है. So no values in fact. ये सही नहीं हुआ, right? Not nice, not nice. ये तो सही नहीं हुआ. नहीं यार, ये गलत हो रहा है. There is no such value of a कि ऐसा हो सके. But then ये क्वेश्चन का मतलब ही बनेगा फिर तो ऐसे तो मेरे this must be greater than 0, right? It's got to be increasing throughout, right? तो less than 0 तो अपन already देख चुके हैं. Bigger than 0 यानी कि 0 to 1/3 में it must be increasing. Then this thing must be bigger than 0 throughout. But that's like this thing. हाँ ठीक है, I can just conclude कि ये काम नहीं कर रहा है. So no such value of a. So 46 का a का आंसर है no such a. Okay, b का करते हैं. fx is this thing and this is decreasing for all x, and value of p is this thing is decreasing for all x. इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या जा रहा है? Just wait, for all x you said. Okay, it's like 3 times of ये जो भी क्वांटिटी आने वाली है इसको मैं कुछ तो नाम देता हूँ अभी के लिए m. So 3mx square minus 3x. So ठीक है, तो मर गया, right? This has to be less than 0 for all values of m. Only one way कि m negative हो या फिर 0 हो, right? Then it's gonna work. So m has to be less than or equal to 0. Yeah. Otherwise infinity में तो नहीं हो रहा है. Infinity positive हो जाएगी अगर m positive है तो, right? So what does that mean? Square root of p plus 1 upon 1 minus p
plus 1, that has to be less than or equal to 0. Less than or equal to negative 1 or whatever. Well, of course, then in that case, ये जो पूरी चीज़ है that should be negative. So this must be negative, right? Because ये चीज़ हमेशा positive रहती है. Oh, and this for this to be in domain, p must be bigger than negative 1. Only then it will actually work, right? Yeah, okay, then negative p is less than 1. So ये चीज़ automatically, no, it's like, okay, it's less than 2 automatically, nothing else. ठीक है. This must be negative, we can say that for sure. So 1 minus p is less than 0. So p actually has to be bigger than 1 itself. So ये तो ठीक है, ये तो obvious था in that case, right? Okay, फिर in that case अपन multiply कर सकते हैं by changing sign. So ये हो जाएगा bigger than or equal to 0 और right, so like negative p minus 1 हो जाएगा ना यहाँ पे. Yes, which means p oh, इसको डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हो? नहीं, ये नेगेटिव है. इन नेगेटिव इट वोंट वर्क लाइक दैट. बट ये तो ऑब्वियस है ना अब. या ओके, नहीं, अब ये नेगेटिव था, अब ये तो पॉजिटिव है. हाँ, सब को स्क्वायर करते आएगा फिर. सो p प्लस 1 इज बिगर देन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1. सो p स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया. p स्क्वायर माइनस 3p is less than 0. So p belongs to 0,3, right? But p is also bigger than 1, so it will belong to 1,3. So ये range रहेगी, which is not here. Seriously, what? Why is it not here? Oh, it's p plus 5, not p plus 1. मुझे क्या लग रहा था अजीब सा. Right, okay. Once again, pretty much the same stuff. You know, p has to be bigger than 1 and everything. ठीक है, वो सब okay है. Square किया, यहाँ पे plus 5 आएगा instead. So instead यहाँ पे आ जाएगा p square minus 3p and minus 4 is less than 0. So actually p belongs to, you know, p belongs to, यहाँ पे minus 4 and plus 1, so belongs to negative 1,4, right? Multiplication negative 4 है, addition 3 है, उसका negative कर दो. Yes, that's the thing. So right, and it's bigger than 1, so actually 1,4. So q is the answer, right? So b का answer q. Next 47. Sorry, नहीं, पहले c करना पड़ेगा, right? Fx is equal to this thing has exactly one local extremum. The set of values of lambda is. इस चीज का क्या है? अच्छा, ठीक है, ठीक है. लोकल मैक्स एक्सट्रीमम, सॉरी, सही नहीं हो रहा है. फाइन, व्हाट जस्ट डायरेक्ट ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है. 2 sin x cosine x प्लस ये तो कांस्टेंट है यार, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ. सो ये जो भी है इसको m बोल दो लाइक m cosine x दैट इज इक्वल टू 0. तब एक्सट्रीमम होता है. सो लाइक आइदर cosine इक्वल टू 0 और sin इज इक्वल टू नेगेटिव m अपॉन 2. सो अपन बोल रहे हैं कि इसका एग्जैक्टली 1 लोकल मैक्सिमा है. तो ऑलरेडी ये चीज जो रहने वाली है वो तो हो ही रहा है. एंड ये चीज जो है सो ये और में आएगा, राइट? इसका अपने को रूट नहीं मिलने चाहिए, बिकॉज देन या राइट. सो आइदर यू नो, ओके, लेट्स जस्ट से m इक्वल टू 2, इट विल वर्क, राइट? क्योंकि फिर ये और m इक्वल टू नेगेटिव 2 ये स्टिल काम करेगा. नहीं 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 नहीं, ओके, इट्स गोइंग फ्रॉम नेगेटिव पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2, राइट? इट वुड हैव वर्क ओनली देन. हाँ, wait, what? इसका मैक्सिमम वैल्यू तो सिर्फ ओह वेट माइनस 5.2 भी जा रहा है. ओह ओके, फिर कोसाइन इक्वल टू 0 के नहीं हो सकता फिर. ओके फाइन, सो दिस इज द ओनली थिंग दैट विल गिव अस, राइट? साइन का, हाँ ठीक है, समझ गया मैं, राइट? सो इट शुड बी एनी सच थिंग्स दैट ये ऐसा होता हो. तो क्या हो रहा है माउस में, कहीं फेंक क्यों? ओके, so m is equal to negative 2 sine, and then that belongs to negative 2, right? So इस चीज का इसकी जो रेंज है that belongs to negative 2. lambda minus 1 का स्क्वायर minus what 2 belongs to negative 2. So lambda minus 1 squared belongs to 0,2. Oh, so it should be 2 4, ठीक है? So lambda minus 1 belongs to, you know, square root ले लो यहाँ पे 0 to 2, अगर पॉइंट्स ले दो, बट नेगेटिव तो नेगेटिव, yeah.
So lambda belongs to negative. So one add किया 1.3. Yes, right. Which is our option. Next D. Uh, right. Values of A for which the negative and for which one negative and two positive real roots of the equation this equation are possible. एक रूट नेगेटिव चाहिए और एक रूट पॉजिटिव चाहिए अपने को फॉर दिस इक्वेशन. यार ये माउस वो क्या जो भी है. Values of A for which one negative and two positive real roots of the equation are possible. X cube minus 3x plus ऑलरेडी डिप्रेस्ड क्यूबिक में है ये, राइट. इसका तुम अगर इसका डेरिवेटिव देखते हो इट्स लाइक 3x स्क्वायर माइनस 3. हाँ, ओके ओके, दिस इज बैड. ओके, 8 times a minus something that will work out somehow. For which one, two positive and one negative. हाँ, so like okay, I'm thinking कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ x square minus px plus q जहाँ पे p और q पॉजिटिव नंबर्स है and then x minus alpha. Actually x plus alpha बोल दो क्योंकि एक अपने को नेगेटिव रूट चाहिए तो ये अल्फा बाय द वे पॉजिटिव नंबर होने वाला है, राइट. सो ये जो चीज है that can be written like this I think. Oh, and by the way it's pretty much clear कि p will also be alpha, so in fact एक अल्फा को p लिख दो, नेगेटिव p will be alpha. नहीं, दोनों तो पॉजिटिव. p is equal to alpha whatever. अच्छा, और ये जो चीज है अपने को ये देखना चाहिए कि अपने को ये मिलेगा, राइट. या ऑल दीज आर जस्ट पॉजिटिव जैसे थिंग. अगर इसको आप एक्सपांड करो, इसका भी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर के लिए ये कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ, सो तो जीरो हो जाएगा, राइट. लीनियर टर्म के लिए प्लस क्यू और फिर यहाँ पे माइनस पी लाइक ओके शिट प्लस क्यू माइनस पी स्क्वायर टाइम्स एक्स, राइट. ओके, और क्या है अपने पास में अब कांस्टेंट टर्म है वो एक टर्म बची हुई which is just a plus pq is equal to 0. हाँ, that just means कि ये जो चीज़ होनी चाहिए that should be positive, that's all it's saying. Oh, and by the way q minus p square is actually just equal to 3. Okay, okay, q is equal to 3 plus p square, but p can be like any, it can be 0 or whatever, right. हाँ, p को 0 तुम पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, राइट. Accordingly to make proper q निकाल पाओगे from that and then you will get this thing. Yeah, okay. So the only condition is कि a square minus a should be positive. Other than ऐसे कुछ खास है नहीं इसमें, right. There we go. A square plus a must be minus था नहीं, bigger than 0, right. Yeah, that's the only thing. So like a belongs to negative infinity. हाँ ठीक है, either a is bigger than 1 or it's less than 0, जो कि है नहीं है इसमें. वाह क्या यार, should only contain values that this is actually bigger than 0, then it's going to be positive, so then it's going to be possible, right. जो कि इसमें है नहीं. what about this range negative infinity to 0 and then ठीक है 1 से बड़े नंबर्स इसमें 0 से छोटे नंबर्स भी है, बट ये चीज क्या है. ओ या नहीं नहीं, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह इसमें नहीं काम, ओके इसमें काम नहीं करेगा. For this to have 3 roots, in fact what should happen. ये अजीब है यार, अजीब क्वेश्चन. So q minus p square is just what is this, q minus p square is just equal to negative 3, right. कहाँ पे चला गया. Yes, so oh shit it's negative 3. मैंने क्या किया ये, it's not 3 plus, oh it's supposed to be negative 3, so negative 3 plus p square, or you can say okay p square is just 3 plus q, so basically q is p is just square root of 3 plus q, so ये जो पूरी चीज है that's just gonna be like q square root of 3 plus q or whatever, right. And q is just some kind of positive number. Okay, understandable.
अब क्या, क्यू तो कुछ हो सकता है, इट कैन बी जीरो और वट एवर. द ओनली कंडीशन इज दैट दिस मस्ट बी पॉजिटिव, अदर देन दैट देयर इज नथिंग एल्स, राइट. या तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज तो जीरो टू इन्फिनिटी जा रही है, फर्क क्या पड़ रहा है. सो हाँ, that's the only condition, as far as a must be positive, that's it, really. Which means of course a just is either bigger than 1 or less than 0. So s में ये negative 1 और 1 कैसे आए, sorry negative 1 और 2 कैसे आया, how did that happen? I don't get it. Whatever. ठीक है, no problem. This is it. It's all we need to know. S is a solution, but like ये कंस्ट्रेंट्स क्यों तुमने यहाँ पे रखे, ऐसा कुछ है कि तब तुम्हें रियल सोल्यूशन मिलते हैं, नहीं तो तुम्हें नहीं मिलता है? नहीं यार, नहीं ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है. Oh yeah, actually it is the case. Look, the thing is, this should have real roots. तो फिर क्या हो जाएगा? P square is bigger than 4q. Shit. Should have known that. And then this is just that. So like 3 plus q is bigger than 4q. So actually, shit, q is less than 3. So q is less than 1, right? Yeah. Hmm. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी कुछ तो भी. Oh, ये सही नहीं हुआ. इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है. Okay, that's why. हाँ. और नेगेटिव भी हो सकता है ना, राइट. जैसे मैक्सिमम वैल्यू 2 रहती है, और फिर उसमें ए स्क्वायर का कैसे इन्वॉल्वमेंट है. Well, a square plus a has to be this thing. So at max it's like 2. तो फिर okay, wait a second. A square minus a just belongs to 0 comma 2. That's what you're saying, right? Okay, so it has to be bigger than 0 and less than 2. Actually, inclusive, whatever. So this being bigger than 0 just means ki it's either less than 0 and bigger than 1. And this being less than 2, a square minus a minus 2 is less than 0. What does that mean? A minus 2 times a plus 1 is less than 0. So a has to actually belong to negative 1 to 2. And that's where this comes from. Okay, okay. अब मुझे समझा कि क्या हुआ. अगली बार समझे ऐसा पूरा चेक कर. ठीक है, next question. 47. F of x is this thing, right? Number of points of discontinuities. So 1 to 3 में तुमने ऐसे डिफाइन किया. गॉड, क्या क्या ऑप्शन है? 0 5 2 1. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, what? Seriously, fractional part of x square is going from 3 to 7 upon 2. 7 upon 2, what? Like 3 and a half. Uh-huh. 3 square is 9 and 7 upon 2 square is 49 upon 4, which is that 9 or something? 49 upon 4. Yeah, it's 46 plus 3 upon 4, so 9 and 3/4. Okay. So वहाँ से बाहर में कहीं डिसकंटिन्यू नहीं है. Okay, that's understandable. So अगर मैं ट्राई करूँ ग्राफ करने का, so 3 to 7 upon 2, 3 to 3.5, क्या हो रहा है? It's continuous everywhere. अच्छा, 3 पे क्या exactly? It's fraction part of 9. It's 0. हाँ, 0 है, and then it's gonna go till 3/4, of course. जो भी है, राइट, अंडरस्टैंडेबल. ओके, और उसके पहले क्या हो रहा है? सो दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का फ्लोर फंक्शन. गॉड, इट्स गोइंग फ्रॉम 1 to 3. हाँ, 2.7 समथिंग. सो पहले तो ये 1 रहने वाला है, राइट. जब ये सो बिटवीन ई एंड 3 इट्स गोइंग टू बी व्हाट, 1, राइट, फ्लोर फंक्शन. और उसके पहले 0 हो जाएगा. सो ठीक है, ई के पहले तब तक कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है की है एक्चुअल में, बिकॉज ई के पहले 2 आएगा और 2 पे शिट, 2 पे ये देखो ना यार. ओह गॉड, वहां पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, बट है ना, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है. सो 2 पे अपने को प्रॉब्लम होगी. सो ई इज समवेयर ओवर हियर, 2 इज देयर, 2 पे प्रॉब्लम है. ओके, सो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है. ओके, ई पे क्या हो रहा है? ई पे पहले से ही पूरा 0 है यहाँ तक, राइट. ओके, एंड ओके, इट्स ओनली स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ओके, तो यहाँ पे 1 भी अपने को इंक्लूड करना है, लाइक दिस आई थिंक. सो 1 to 2 में क्या हो रहा है?
So log base e of, I don't know, 1 से बड़ा नंबर है ना, that's the thing. So 1 से बड़ा नंबर है यानी कि wait, what? Something's not right. So e power 1, that's e. उससे छोटे नंबर. What is e power negative 1? It's like 1 upon e. That's like negative. So e power 1 is 0. Sorry, natural log of 1 is 0. चलते जाओ, फिर e तक तुम्हें 1 मिलेगा, राइट. सो बीच में इंक्रीजिंग है, दैट्स व्हाट वी कैन से फॉर श्योर. तो दिस इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1 टिल हियर. तो 2 में तो ऑफ कोर्स लाइक 0 हो जाने वाला है. इट्स 0 थ्रू आउट, राइट. दैट्स द थिंग. एक्सेप्ट कि यहाँ पे जाने से स्पाइक कर रहा है टू 1 नाउ, राइट. ओके, और तब एक्चुअली क्या हो रहा है, इट्स लाइक ओके, ये क्या चीज़ है, मॉड एक्स अपॉन एक्स माइनस 2. हाँ, यहाँ पे तो ये कंटिन्यूसली जस्ट 1 रहने वाला है, बिकॉज मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज लाइक एक्स माइनस 2 इटसेल्फ. सो दिस इज जस्ट लाइक 1 थ्रू आउट. तो लाइक ओके, 2 कब होता है इसका, एट ई स्क्वायर विच इज वेरी फार, इट्स गोना बी 10 और समथिंग. तो यहाँ तक तो ये 1 ही है, और फिर अचानक से ड्रॉप करता है टू दिस पॉइंट. सो कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 पॉइंट है डिस्कंटिन्यूटी के. सो ए का आंसर रहेगा, 3 क्यों नहीं है इसमें, तो सिर्फ हाँ. क्या ये अपने को डिस्कंटिन्यूटी गिननी है कि नहीं गिननी है, ये तो है ना, ऑफ कोर्स, राइट. It suddenly goes to this thing. मतलब एग्जैक्टली 3, ओ इसमें एग्जैक्ट 3 है ही नहीं, इसमें 3 तुमने स्टिल, ओके 3 से थोड़ा सा बड़ा, 3 प्लस एच उसका स्क्वायर, स्टिल 0 हो जाएगा ना फिर. हाँ, एग्जैक्टली 3 पे 1 है, ओके फाइन, बट स्टिल ये नीचे तो जा रहा है, सम काइंड ऑफ जंप. यहाँ पे तो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे डिस्कंटिन्यूटी के, राइट. मतलब यहाँ पे थ्रू आउट 1 है, इट मस्ट बी लाइक दैट. ये 2 पॉइंट्स और ये एक और पॉइंट रहेगा, बिकॉज एट 2 इट्स नॉट डिफाइंड एक्चुअली, बट देयर इज नो 3 ऑप्शंस तो है ही नहीं. फिर क्या हो रहा है, अपन खुद डाल दें, ए का आंसर 3 नॉट इन ऑप्शंस. बी का करते हैं, फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, and then e power negative 1 upon mod of x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. अच्छा, number of points of extremum is, look, sin of 1 upon x, square root 2 is more than 1. all you need to know is कि ये जो चीज़ है that's actually just positive, और ये जो चीज़ रहेगी that's also positive. ठीक है, पूरा positive है, that's understandable. 1 upon mod of x, हाँ, when x approaches 0 this thing approaches 0 as well, because हाँ ठीक है. So yeah, and then when x approaches infinity or something, that's when this will start getting small. Okay, और ये चीज़ बहुत डेविएट कर रही है इनफैक्ट, राइट. पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, ये काम करना, फिर से पॉजिटिव एक्स के लिए देखते हैं, और फिर वही सेम चीज़ अपन रिपीट कर देंगे. नहीं 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 नहीं, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे निगेटिव आता है. क्या हो रहा है, ठीक हो जा, ठीक है. सो फिर 2 ब्रांचेस लेनी पड़ेगी, एक रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स टाइम्स ई पावर नेगेटिव एक्स लेंगे, सॉरी नेगेटिव 1 अपॉन एक्स. और वेट, सब कुछ अगर 1 अपॉन एक्स में है, राइट, या ओके ओके, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड. सो एक काम करो, स्क्वायर रूट 2 प्लस और माइनस साइन ऑफ एक्स ले लो, बिकॉज द थिंग इज 1 upon mod of x, so x जब 0 नहीं है, okay, right, it's going from like क्या infinity to 0 to infinity, 0 not inclusive of course, but it is going like that, right. Yeah, so just उसको x से replace कर देते हैं 2 मिनट के लिए, so ये चीज़ हो जाएगी, right. And then you want to find the points of discontinuity of, नहीं sorry, points of extremum of this thing, so I will later. So plus minus cosine of x, right, e power negative x, okay, और फिर इसका डेरिवेटिव, so minus square root 2 minus plus sine of x e power negative x, right. That has to be 0, this cannot be 0, you know that. So तो ये गया. What does that mean? That means sin x, ये तो PhD plus minus में तो लिख लेते हैं,
minus cosine x is equal to negative square root 2 or something. So basically ठीक है, वैसे भी प्लस माइनस होने वाला है, so क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस माइनस ऑफ sin x minus cosine x is equal to square root 2, or just say plus minus square root 2, which is like, okay, sine of x minus pi upon 4 is equal to plus minus 1. So x minus pi upon 4, or more like, okay, ये equation almost इस equation से identical है, right? Yeah, of course. So by the way, अपन x हमेशा positive ले रहे हैं इसमें throughout. Yeah. So right. और ये जो चीज है ना, जब अपने प्लस माइनस डाला उसमें से दोनों ब्रांचेस एक साथ कवर हो गए अपने, सो नो वरी अबाउट दैट, राइट? सो या दिस इज द थिंग, जब x पॉजिटिव है देन राइट ओह ओके वेट, सो हर ब्रांच के लिए अपने पास में फिर राइट, तो उस x को अपने को नेगेटिव भी करना पड़ेगा टू गेट दैट थिंग, राइट? फिर एक्चुअली अपने को दो टाइम्स मिलेंगे सॉल्यूशंस, राइट? So ये कब होता है when x is equal to pi upon 4 plus some odd multiple of pi upon 2? ऐसे तो हजारों पॉइंट्स हो जाएंगे ना, या राइट, ऐसे तो हजारों पॉइंट्स हो जाएंगे. तो सिर्फ पॉजिटिव वाले इसमें ही तो देख लो हजारों पॉइंट्स होने वाले. Not nice. Starting from infinity going to 0 or something. Yeah, right. हजारों पॉइंट्स. ओह नहीं, लुक, नहीं इसमें सही है, हजारों पॉइंट्स रहेंगे इसमें, राइट? दैट मस्ट बी द केस, ऑफ कोर्स. उसे वो भी आएगा नेगेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर वगैरह, बट वो जानते हो, वो नहीं देखते अपन, राइट? दैट मींस इट्स लाइक नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर एक्सपोनेंस लाइक इन्फिनिटी और समथिंग. हाँ, मतलब लोकल एक्सट्रीमा एटलीस्ट. ओह, अपने को सिर्फ दी एक्सट्रीमा चाहिए, नॉट दी लोकल एक्सट्रीमा, वांट दी एक्सट्रीमा, राइट? ओके, think. We know that whenever x is like pi upon 4 plus or multiple of pi upon 2 अपने को एक्सट्रीमा मिलता है, बट क्या वो एक्चुअल में पूरा का पूरे ग्राफ का एक्सट्रीमा है कि नहीं, फिर वो चेक करना है. ई पावर नेगेटिव एक्स मतलब एक्स के, जब एक्स बहुत जीरो के पास, एक काम करो ना, जो अपन ने अभी अपन एक्स यूज कर रहे हैं, कि वन अपन एक्स को रिप्लेस किया, वो यूज करते हैं अपन, बिकॉज इन दी एंड दोनों सेम ही चीज होगा, कि नहीं अपन नॉर्मल एक्स यूज करते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, यू नो? सो जब x इक्वल टू 0 रहने वाला है, एट x इक्वल टू 0 मतलब 1-1 मैपिंग हो जाएगी ना, सो नो बिग डील. अच्छा, x इक्वल टू 0 पे कोसाइन ऑफ नेगेटिव पाई अपॉन 4 जो भी आ रहा है, एंड देन ओह सॉरी, अपने को इस फंक्शन का देखना है, राइट? सो एट x इक्वल टू 0 इज लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2e पावर नेगेटिव 1 अपॉन, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 2e पावर नेगेटिव 0 व्हिच इज स्क्वायर रूट 2. स्टार्ट अपन स्क्वायर रूट 2 से कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद में क्या हो रहा है, ई पावर नेगेटिव एक्स इज गोना डैम्प आउट, राइट? और सो पाई अपॉन 4 पे करके एक्सट्रा मिलेगा, राइट? एट दैट पॉइंट ये चीज ओके स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन, नहीं प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, एंड हाँ, हाउ कैन बी श्योर कि वही चीज रहेगी? वेट, कभी भी ये वापस स्क्वायर रूट 2 कभी टच नहीं करने वाला है, राइट? या मतलब नेक्स्ट टाइम, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब कब होती है इस चीज की? सो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ प्लस साइन एक्स, सो व्हेनेवर साइन एक्स इज लाइक 1, सो पाई अपॉन 2 हो सकता है, पाई अपॉन प्लस 1 पाई हो सकता है, व्हाटएवर. पाई अपॉन 2 पे अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 एंड देन ई पावर नेगेटिव पाई अपॉन 2, व्हिच इज दिस लाइक बिगर देन स्क्वायर रूट 2 और नॉट? दैट्स द सेम एज आस्किंग इज ई पावर पाई अपॉन 2 एक्चुअली बिगर देन, सो इसको उधर भेज दो, राइट? बिगर देन 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2. अब ये चीज अपन कैसे ढूंढेंगे? Of iota, right? We can use this about iota, I think. That's a really bad idea. I don't want to do that. It's like saying pi upon 2 is bigger than natural log of 1 plus 1 upon square root 2. We don't know. क्या ये एक्चुअली में काम भी कर रहा है? 1 plus 1 upon square root 2, seriously? This is like, अच्छा अपने को इसके लिए टेलर सीरीज पता है ना, so we can use that thing. So pi upon 2 which is 1.57 something, और ये चीज क्या हो जाएगी, natural log of 1 plus 1 upon square root 2. You can use the Taylor series, so x 1 upon square root 2 minus 1 upon x square
सॉरी नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, मतलब कि 1/2 अपॉन टू लाइक 1/4, फिर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 आई थिंक, यस एक्स क्यूब अपॉन 3 got to be a thing of course. So 1/2 square root upon 3 is like 1/6 square root 2 and so on. So start में क्या square root 2 upon 2 which is like 0.7 something, minus 1 upon like minus 0.25 something, plus ये चीज which is square root 2 upon 12, seriously, so 1.4 something upon 12 which is most likely 0.1 something जो भी है, और इसके बाद में हाँ थोड़ा सा कम कम होता जाएगा एंड देन राइट, सो अराउंड व्हाट, यार ये तो मतलब हाँ ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, बिकॉज द थिंग इज लाइक 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट टू वैसे ही ई से छोटा है राइट, या मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट इज लाइक 0.7 something or e is 2 point something, so yeah that's done. What does that mean? कि this is correct, this is actually correct, right 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 right, wait what, उसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज इससे बड़ी है, बट शिट, ओ अपन ने ये उल्टी नहीं वाली सॉल्व की, अपने को एक्चुअली ऐसा करना था, और ये तो गलत है अपने को पता है राइट, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि अगला जो मैक्सिमा आने वाला है वो इनफैक्ट काम ही नहीं करेगा, हाँ तो इसकी हो गई मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, जस्ट नो दैट, या दैट्स इट राइट, सो स्क्वायर रूट 2 है मैक्सिमम वैल्यू, यू कांट चेंज दिस, और सिमिलर बिहेवियर अपन आगे के लिए बोल सकते हैं कि अब जो अब मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा जहाँ भी अटेन कर रहा है उसके बाद में कभी भी ये इतना नीचे नहीं आ पाएगा राइट, सो ये स्टैम्प हो जाएगा वॉट एवर हैपन्स, सो ये एक्सट्रीमम वैल्यूज है इसकी राइट, या और x इक्वल टू 0 अपन बोल रहे हैं बट एक्चुअल में वो हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू 0, यस विच इज गोइंग टू हैपन एट x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो वहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा विच इज स्क्वायर रूट 2 एंड मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा कहीं तो भी इस पॉइंट पे जिसका कोई ना कोई यू नो यू गेट टू थिंक, या राइट, सो एटलीस्ट पॉजिटिव एक्स अपन समझ सकते हैं क्या हो रहा है, व्हाट अबाउट द नेगेटिव एक्स थिंग्स, आई गेस वहाँ भी अपने को दो रूट मिलेंगे राइट, या सो आई एम ओके, जो ये वाली जो लास्ट रूट है दैट्स एक्चुअली एट इंफिनिटी और समथिंग, सो नॉट नाइस, फिर अपने को इसमें दो सबमिट करना है कि क्या, आई थिंक 2 इज द वे टू गो, नेक्स्ट 48, नहीं पहले तो इसको सी करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स एट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ये चीज, अच्छा ये कब कब डिफरेंशिएबल नहीं है मेरे को देखना है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 माइनस एक्स क्यूब, ओ अच्छा 3 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड, हाउ इज दैट गोइंग टू बी, माइनस एक्स स्क्वायर इज लाइक लुकिंग लाइक दिस, और 3 से ऊपर किया अपन ने और फिर उसका मॉड ले रहे हैं, सो एट स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 अपने को यू नो विल गेट द थिंग, स्क्वायर 3 इज स्लाइटली मोर देन 1 और ये 3 है इनफैक्ट, ये काफी बुरा चाहिए लाइक दिस, अपन सिर्फ पॉजिटिव का देखकर एक्चुअली अपने को नहीं, अपने को पूरा का पूरा देखना चाहिए राइट, और दूसरा क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब राइट, सो ये चीज भी 3 से स्टार्ट करती है बट देन इट्स माइनस एक्स क्यूब, सो अगर मैं उल्टा जा रहा हूँ उससे प्लस एक्स बेस बिहेव करेगा, या सो इट विल राइट, ओके ये ऐसा था, इट्स गोना बी गोइंग अप इन फैक्ट, और मैं थोड़ा सा कर्वेचर गलत बनाते हैं ना, कर्वेचर एक्चुअली शुड बी लाइक दिस बिकॉज यू नो इट वाज लाइक या सिमिलरली यहाँ पे भी इट्स गोइंग अप बेसिकली, और ये चीज भी तो इनफैक्ट ऊपर ही जाती है राइट, ओके और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, कभी ना कभी इसको ओवरराइड कर देना है राइट, अच्छा ये कब इक्वल हो गए, सो आवर क्वेश्चन नाउ रियली बिकम्स की व्हेन इज 3 प्लस एक्स क्यूब, सो मैं उल्टा जा रहा हूँ इसमें x को नेगेटिव x से रिप्लेस कर रहा हूँ, नो बिग डील, व्हेन इज दैट इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे तो कोई नहीं हो रहा है दैट वी कैन से फॉर श्योर, और ये जो चीज है दैट्स लाइक तुमने इसको नेगेटिव कर दिया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये कब होता है, अच्छा रीड मत करो, इट्स लाइक 6 इज इक्वल टू, ये तो कर सही नहीं हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मेरे को ये चीज देखनी है,
Not nice, not nice at all. नहीं, काम नहीं करेगा. Let's try out 2. So 8 minus, अच्छा negative 8 minus 4. नहीं, काम नहीं करता है. 1 तो वैसे ही काम नहीं करेगा. ये तो अजीब है यार. इसका डेरिवेटिव क्या है? 3x माइनस 2x प्लस समथिंग. ओके, ठीक है, उसका डिफरेंट पॉजिटिव है अनफॉर्चुनेटली. बट ये कभी ना कभी तो होने वाला है, राइट? अच्छा, अपने को सिर्फ पॉजिटिव एक्स में देखना है, राइट? स्टिल 3x minus 2x is like, oh god. Oh, and by the way, x is bigger than square root 3. So अपने को तब देखना है एक्चुअली. सो फिर इसका डेरिवेटिव क्या है? 3x minus 2x plus 6 जो भी है, बिकॉज x अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है व्हेन यू हैव x इज इक्वल टू प्लस 6 होना है. डेरिवेटिव की बात करते हैं. सो मिनिमम वैल्यू होती है व्हेन x इज इक्वल टू 1/3 इस डेरिवेटिव की, राइट? या और इसका एक रूट है 2/3. सो 2/3 आगे अपने को पॉजिटिव भी मिलने वाला है, राइट? और स्क्वायर रूट 3 वर्सेस 2/3. स्क्वायर रूट 3 इज मोर देन 1, दिस इज लेस देन 1. सो ऑब्वियसली उसके आगे अपने को पॉजिटिव नंबर से मिलेगा सिर्फ. सो इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग थ्रू आउट. दैट्स व्हाट यू कैन से फॉर श्योर. सो या, तो इसमें एक ही रूट रहने वाला है आगे. और फिर क्या, ऑब्वियसली इसको ओवरटेक कर देगा ये कभी ना कभी. वेट, व्हाट इज नॉट राइट अबाउट दिस यार? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? It's not positive, right? इसका रूट 2/3 जो रहेगा, जो बड़ा वाला रूट है, इसके आगे पॉजिटिव है. 2/3 इज लेस देन स्क्वायर रूट 3. स्क्वायर रूट 3 के आगे फिर पॉजिटिव होना चाहिए. दैट मीन्स दैट 3 plus x cube is increasing at a higher speed than x square minus 2. Oh, इसका अपने को कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा इनफैक्ट, बिकॉज सॉरी x माइनस 3, ये जो चीज़ है ये कम इंक्रीज कर रहा है, इट्स ऑलरेडी इंक्रीजिंग एट हायर स्पीड. सो यहाँ पे अपने को एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा. सो थ्रू आउट दैट, सिर्फ जो अपना एक्स क्यूब वाला फंक्शन है, दैट इज इनफैक्ट द मैक्सिमम वैल्यू, राइट? वेट, सॉरी, कौन सा वाला फंक्शन था अपना? 3 plus x cube, राइट? वेट, something is going wrong. 3 minus x cube था ना यार, कहाँ पे चला गया? या 3 minus x. So अपना जो 3 minus x वाला फंक्शन है, which is going like this thing, that is the bigger one. So ये मैक्सिमम रहने वाला है थ्रू आउट. अच्छा, फिर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या है? यहाँ पे इसका डेरिवेटिव रहने वाला है negative 3x square and x equal to 0, right? That's 0 fortunately. और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? 3x square, वो भी 0 हो जाएगा. अच्छी बात है, राइट? जस्ट लाइक द इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ वाटर. और फिर यहाँ पे चलते जाओ, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ, राइट? यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट करेगा एंड आफ्टर दैट इट वोंट, राइट? या, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, सो इट कांट. अच्छा, एट स्क्वायर रूट 3 ये चीज 0 है, एंड वो तो अपने को देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, राइट? या, और बेसिकली उल्टा है, या इट्स मोर फ्लैट और समथिंग. सेकंड डेरिवेटिव 0 है, वी नो दैट. ठीक है, तो व्हाट डज दैट मीन कि ये यहाँ पे एग्जिट करेगा एंड जस्ट चला जाएगा. सो ये पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है अपना कर्व, ये पॉइंट पे है, एंड दैट्स इट. सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट्स इट. या, सो सी का आंसर 1, एस. Oh, and B का आंसर 2 था, that's going to be R actually. Next, let's go to D. ये कितना मतलब लेंदी है ना. Limit as x tends to 0 of ये सारी बड़ी चीज is equal to where this is not greater than 0 less than or equal to x. 2 plus 3 plus चलते जाओ till 1 upon mod x का floor function. God, what? अच्छा, x tends to 0. Okay, फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हर जगह पे even है सब कुछ. Okay. As x tends to 0, ये चीज in fact like this thing just tends to infinity. तो उसका floor function d infinity पे जा रहा है, right? So yeah, right. लेकिन से approximately जो चीज है, मतलब इंटीजर पार्ट जो फ्रैक्शन पार्ट रहेगा वो इतना इंपॉर्टेंट, अपन सिर्फ पॉजिटिव एक्स देखते हैं. ओके,
जो इंटीजर पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, सो बेसिकली 1 + 2 + 3 चलते जाओ till how many terms approximately 1 upon x, right? Yeah, 1 upon x. Yeah, उसका integer part, yes, but approximately इतनी रहेगा. Okay, cool. So this will be like x square, and then you got 1 upon, assume कि x in discretely, I mean, okay, assume कि 1 upon x somehow integer हो गया, then like this, right? और उसके बीच में भी वो ओके ओके है, ऐसा कुछ खास अजीब नहीं हो रहा उसमें, सो इट्स ओके, राइट? ठीक है, 2x पर है यहाँ पे, बाय द वे 1 upon x times 1 upon x minus 1 upon, sorry, plus 1, क्या कर रहा हूँ मैं, upon 2, ये तो गया. It's going to be 1 times x plus 1, yeah? Okay, and as x tends to infinity, नहीं, अच्छा ये 0 approach कर रहा है ना, right? It's gonna approach 1, right? Yeah, that's it. So D का आंसर S है as well. Okay, next question, which is 48. If the straight lines, either straight lines, meet the coordinate axis at in concentric points, then okay, the coordinates in concentric points. Okay, that's weird. So y equal to a1 x plus b and y equal to a2 x plus b. और ये चीज क्या है, a1, ये क्या सिंबल है यहाँ पे? आई थिंक लेस देन था, जो भी था ये. एंड अच्छा b बिलोंग्स टू है, क्या है ये, क्या कर दिया इन लोगों ने? ठीक है, सो b1, वेट, ये सेम ही b लिया इन लोगों ने, अलग अलग b नहीं है. हाँ, ओके, सो सेम चीज है. ओह ओके ओके ओके, सो द थिंग इज b कॉमा से, ओके, दैट्स द सेम पॉइंट, और वहां से तुम दो लाइंस ड्रॉ कर रहे हो. इट मीट्स द एक्सिस इन सो कॉन्सेंट्रिक पॉइंट्स, राइट? ओके, ये तो पॉइंट इनफैक्ट सेम ही रहने वाला है, राइट? तो दोनों के लिए, बट फिर सिर्फ 3 इसमें पॉइंट्स हो गए, तो एक ट्राइंगल हो गया, और उसका तो अपन सर्कल से हमेशा ढूंढ सकते हैं. सो हाँ, राइट, या या आई मीन x equal to 0 just puts y equal to b. so ये तो एक ही पॉइंट हुआ, पर अपने को 2 पॉइंट चाहिए, बिकॉज तभी अपन 4 पॉइंट्स रख सकते हैं एटलीस्ट, और फिर वो कॉन्सेंट्रिक का मतलब रहेगा. अदरवाइज वो मतलब थोड़ी ना है, मतलब ये तो अपने आप होता ही कॉन्सेंट्रिक. व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? there's no restriction on this thing. मे बी यहाँ पे नेगेटिव, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है. नहीं यार, अपन हमेशा इनफैक्ट ये जो 3 पॉइंट्स अपने को मिलेगा उसके थ्रू सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, राइट? अनलेस ऑफ कोर्स वो ट्रायंगल बने ही ना, इन विच केस ये सेम हो जाएगा. इट्स लाइक ओके, a1 शुड नॉट बी इक्वल टू a2, देन इट वुड बी ओके, राइट? आई थिंक वही ये चीज थी, बट फिर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, सो हाँ, राइट. सो ए का आंसर क्या है? नो रिस्ट्रिक्शन. या फिर बस क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं इस पे. मुझे तो नहीं लग रहा कोई होना चाहिए. What about B? If the chord of contact of the tangents drawn to this, what? If the chord of contact of the tangents drawn to this and belongs to from any point, B कहाँ पर है इसमें? कुछ भी, क्या क्या कर रहे हैं लोग? Contact chord drawn to this. अच्छा, ये ऊपर वाले लोगों ने लिखा दिया वैसे, ठीक है. Chord of contact of tangents drawn to this from any point on x square plus y square equal to a1 square. अच्छा, touches the circle. Okay, this circle. हाँ ठीक है, कर सकते हैं इसको, नो बिग डील. So जो ऊपर वाला जो पॉइंट रहेगा, लाइक a1 cosine थीटा और a1 sin थीटा बोल दो ना, राइट? इस सर्कल का पॉइंट, और chord of contact to this circle. So you get the deal, x a1 cosine theta plus y a1 sin theta, that's equal to 4. That's our chord of contact, and it's gonna be tangent to this, so 4 upon square root of, अच्छा a1 तो बाहर निकाल लो, just ये तो वैसे भी मतलब, राइट, ये वैसे भी हो जाएगा, लाइक 4 upon a1. हाँ, yeah, and by the way अपन a1 वगैरह यूज करें, it should just be mod of a1, right? Yeah,
and it touches the circle this thing. So this must be equal to the radius, which is a2. So a2 times a1 mod a2 times mod a1. That's going to be 4. That does it. So R is the answer. Next, C. If the circles, these two circles cut orthogonally, orthogonal cutting का मतलब क्या हुआ कि d square equal to r1 square plus r2 square basically, right? या फिर तुम बोल सकते हो s with एक सेंटर जो रहेगा उसका जो पावर ऑफ पॉइंट है with the other circle that's equal to that guy's radius squared, right? Yeah, right. तो अगर ये orthogonally cut कर रहे हैं then what's gonna happen? That's the condition, right? Of course. So जो start वाला है, wait, isn't this the same? नहीं, अच्छा, हाँ ये तो सेम ही है. नहीं, ओके, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नहीं है. Just reflection, right? So पहला जो है that has the center at -a1 negative a2. और इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस का स्क्वायर होगा 1 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, राइट? और दूसरा जो है दैट्स एट a1 a2 जो भी है उसका सेंटर ऑफ कोर्स. तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? और उसका भी रेडियस सेम ही है, लाइक 2 टाइम्स ऑफ दिस. So 2 plus 2a1 square plus 2a2 square that's equal to, so इनके बीच का वेक्टर क्या होगा? 2 times of a1 a2, तो उसका रेडियस उसका स्क्वायर, राइट? That's going to be 4a1 square plus 4a2 square, which means of course a1 square plus a2 square is equal to 1. So not 4, wait, that's not correct. r1 square plus r2 square, that's going to be this thing of course, or no, this has to be the thing. A1 square plus A2 square is equal to 1, not 4. How does that even... No. क्या हो रहा है यहाँ पे ये? No, it's not making sense. नहीं यार, it should be equal to 1. उन लोगों ने क्यों नहीं दिया? I don't know. बस लिख रहा हूँ यहाँ पे. जो भी ऑप्शंस में नहीं है. Next, D. If the shortest and largest distance from the point 8, 5 to the circle are A1 and A2. Oh, it's like, oh, ये तो easy है. A1 times A2 is just the power of point, right? Yeah. So A1 A2 is, और इसका power of point अपन निकाल सकते हैं. So put that in there. Okay. First of all, x common ले लो. 8 times of 8 minus what? 4, which is just 4. फिर y common ले लो. So 5 times of क्या? Y plus 6, which is 11 minus 12, right? It's the power of point. So 32 plus 55 minus 12, which is 75, right? That's equal to A1 times A2. और वो नहीं है यहाँ पे. क्या हो गया यहाँ पे? It's got to be like that. क्यों नहीं है यहाँ पे? क्यों नहीं है? होना चाहिए. होना तो चाहिए क्योंकि यही पावर ऑफ पॉइंट है. That's the thing. That's d square minus r square. That's equal to the power of point, of course. So right. I mean, like that. So it's of course just d minus r and d plus r, which is d square minus r square. That's the thing. Which for some reason 75 नहीं है ऐसा बोल रहे लोग. ये पागल हो गए. It must be 75. There's no other way, right? हाँ हाँ, और कोई तरीका नहीं है. We know that. So there we go. D का आंसर 75 है. Is equal to A1 A2 of course. But ये ऑप्शन में क्यों नहीं रखा मुझे नहीं पता. रखना तो चाहिए था. Next. Yeah, right. That's the correct thing. Can't be any problem with that. सही तो है यार. और क्या चाहिए? Okay, next. 49. What is this? The medians of triangle ABC are 9, 12, and 15. Area of a triangle is medians here. Triangle area नहीं है. I hate this. Okay, medians here, right? उसको अपन, okay, we can, you know,
बाइसेक्ट कर सकते या सो उसको तब ऐसे मैं चेंज कर सकता हूँ. सो तुम्हारा सेंट्रॉइड है, वहां से तुम डिस्टेंसेस निकाल सकते हो फ्रॉम दीज थिंग्स. सो 9 12, इसका क्या होगा, 2/3 कर डालो बेसिकली. इट्स गोना बी 6 एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट. Oh, and by the way, जो वेक्टर्स इनका एडिशन 0 होता है, राइट? या आई जस्ट वांट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. इट इज लाइक इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद दैट और फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद दैट एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद दैट. सो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का सम, व्हाट्स दैट गोइंग टू बी? दैट्स द क्वेश्चन. ओके, विल थिंक अबाउट इट. पहले तो बाय द वे आपको ये करना है. सो हाँ हाँ, और ये दूसरा वाला क्या है? सो 12 रिस्पेक्टिवली. तो बी का करते हैं पहले. सो उसका 2/3 विच इज सपोज टू बी जस्ट 8 और इसका 2/3 क्या होगा? 10. ओके, हाँ, अच्छे वाले तुमने चीजें दे दी. व्हाट डज दैट मीन? तब अपन इसका ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं. या आई मीन ऑफ कोर्स कैन क्रिएट अ ट्रायंगल फॉर दिस थिंग. सो इनका जो एडिशन होता है दैट्स गोना बी 10, राइट? सो ये 10 इस टाइप से रहने वाला. अब अगर मैं 8 को स्लाइड करूँ, यू गेट द आइडिया, सपोज टू बी 90 डिग्री, राइट? सो सॉरी, ये 90 डिग्री रहेगा. सो वापस स्लाइड करो, जस्ट गेट this being 90 degree, but that means ये पूरा 90 degree है. So actually this is this, it's like that. So 6 8, फिर यहाँ पे 10 है, right? That's how the triangle actually is. Okay, understandable. And now we just want the area, of course. Okay, ये 90 degree है. Other than that, what do we even know? uh, we know some stuff about this angle actually. अपन ये एंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, right? Yeah, this is going to be 10, we know that at least. Wait, that's 10, this is also, अच्छा नहीं, ये 10 रहेगा ना, ये चीज 10 रहेगी, सॉरी. ओके, 90 degree right there. Come on, think. ये एरिया ढूंढना है किसी भी तरह से. ये एंगल्स जो है इनका सम हो जाएगा 270 डिग्रीज. नॉट हेल्पफुल, कुछ भी नहीं हो रहा है. minus that, that's one thing you can do. Come on, think. यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे how? अब इसके आगे क्या करूँ मैं? Just want to like do cross product of these vectors. Wait, okay, इसको मैं a vector बोल देता हूँ, इसको मैं b vector बोल रहा हूँ. Then this whole thing, isn't that just minus a vector minus b vector, तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, b vector क्रॉस ये वाली वेक्टर, राइट? That's only thing, which is of course just minus b vector cross a vector and minus b vector cross, वो तो मर जाएगा, ठीक है. फिर ये चीज है क्रॉस विद दैट क्लॉकवाइज जा रहे हैं अपन, रिमेंबर. सो ये तो वैसे मर जाएगा, इसमें माइनस ऑफ b vector cross a vector, राइट? हाँ, weird. And then ये चीज, good thing is कि okay, b vector and a vector are just perpendicular by themselves. Perfect, isn't that right? और ये चीज हो जाएगी a vector plus a vector cross b vector. That should be doing it. So ये cancel हो जाएगा, just complete this thing, which is like a vector. Oh no, a vector cross b vector is actually this. So that's only like that. And then minus minus, so it's okay. It is going to be 3 times of a vector cross b vector. Nice. Hey, but इसमें अपन ने ये का यूज नहीं किया कि एक्चुअल में ये perpendicular है. So this is actually a general thing कि अपन directly जो area है we can find out like that. Awesome. 3a vector plus b vector. That's the whole thing. Yeah. तो अब तो easy है. अब क्या है? a vector और b vector perpendicular है, and because of that 3 times of it should actually be half of that. हर जगह पे half डाल दो. Yeah, in the end ऐसा हो जाएगा. So 3.2 a vector plus b vector is like 6 times of 8. So ये हो जाएगा 4 times 6 times 3, which is 12 times 6, which is 72, which is option number Q. A का Q. Nice. ये अच्छा था. Next. B करते हैं. 2 rays including an angle of 43 degree. What is this?
emanate from the point A. Lines L1, L2, L3. अच्छा, each from an isosceles triangle with these rays. दो रैंडम रेज है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहे हैं, कोई तो उनके बीच में एंगल दिया, जिस कॉल थीटा फॉर नाउ, सो थीटा इक्वल टू 43 डिग्री। डोंट केयर कि इसका एक्चुअल में क्या वैल्यू है, ओके। और बोल रहे हैं कि L1, L2, L3 form isosceles triangle with these rays. अच्छा, largest angle of the triangle formed by the lines in degrees is, सिर्फ रेज है ना बाय द वे, सो ये उल्टा तो नहीं जाने वाले, ओके। isosceles triangle, तो क्या क्या हो सकता है कि ऐसी हो, इन दैट केस मतलब ए से कनेक्टेड साइड जो रहेगी वो इक्वल हो जाएगी, हो सकता है कि ऐसी हो, राइट। इन दैट केस ये दो चीजें इक्वल हो जाएंगे, बस और क्या। वी वांट द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस डिग्रीज, इजी। ये तो 43 डिग्री होगा, ये 43 डिग्री होगा, आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट एंगल हियर। सो 180 माइनस क्या 86, which is 94, so 94 degrees is not here of course। और दूसरा कुछ I don't know, that's 43 degrees for sure, right? 94 इसमें है नहीं। Largest angle of the triangle formed by the lines in degrees is isosceles triangle। और क्या कर सकता हूँ, छोटा अपने को ये करने से अपने को छोटे एंगल्स मिलेंगे, which is not what we want, right? We want the largest angles, so अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा, that's the only way of। Oh, अच्छा, by the, you mean like L1, L2, L3 से, हाँ? Oh, okay, that's different than what I expected। अच्छा, तो एक काम करो, इसको एक्स एक्सिस ट्रीट करते हैं, ये जो रहेगा विद एक्स एक्सिस कितना बना रहा है, राइट। सो या लाइक ओके, ये जो एंगल रहने वाला है दैट्स गोइंग टू बी 86 डिग्रीज, राइट। फिर अपन इसकी बात करते हैं, राइट। तो इस ये जो बनाएगा, सो ये चीज प्लस ये चीज जस्ट दिस से, बट अपने बताया कि ये तो सिर्फ 180 माइनस ये हो जाएगा, सो 180 माइनस ऑफ 43 डिग्रीज आई थिंक, विच इज अभी के लिए छोड़ देते हैं, नहीं करते 180 माइनस 43 जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो अपने को ये तो मिल गए, सो दो लाइंस मिल चुके हैं, एक तीसरी लाइन भी रहेगी विच इज लाइक आई डोंट नो लाइक दिस और समथिंग, राइट। दैट्स गोना फॉर्म 86 डिग्रीज विद हियर, ओके ओके, सही नहीं हो रहा है। ये 43 डिग्रीज है, वी नो दिस एंगल इज आल्सो 43 डिग्रीज, सो ये 43 डिग्री कहां से बना रहा है, दिस इज आल्सो 180 माइनस 43, हाँ। वेट व्हाट, नो दैट कांट बी द केस। What? No, it's not 43. It is. Wait, actually, yeah, it is 43 because this is sum of. इनका जो sum रहने वाला है, that's just 180 minus this guy, right? Of course. Uh, it's not 43. This is not correct, of course. Wait, or is it? इनका sum in all such cases ये तो 43 डिग्री होगा ना? Wait, what? Wait, something's wrong. Something's wrong. हाँ, मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ, यस मैं बहुत कुछ भी गलत कर रहा हूँ। ओके, अच्छी फिगर बनाओ थोड़ी सी पहले तो, यू नो, और जस्ट यूज थीटा सो दैट बाद में कैंसिलेशन इजी हो। सो ये एंगल थीटा है, अपन पहले इस लाइन की बात करते हैं, सो दिस इज अ राइट, पहले ऐसी लाइन रहेगी, सो इट्स मेकिंग दिस एंगल, ओके, ये जो रहेगा वो थीटा रहेगा, सो दिस होल थिंग इज जस्ट पाई माइनस थीटा। फिर अपन दूसरी लाइन की बात करते हैं विच इज ओके, ये चीज थीटा है एंड these are just equal, right? So ये चीज हो जाएगी पाई माइनस थीटा का आधा, which is like पाई अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2, तो फिर ये चीज इनका एडिशन which is going to be पाई अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2, और लास्ट जो लाइन रहेगी what does that make with x? So ये ऐसा है, right? So this is theta, this thing is theta, so it's going to be 2 theta, just like that, right? Yeah,
मेक सेंस? आई थिंक इट डज, राइट। ओके ठीक है, तो फिर अब जस्ट ड्रॉ दीज लाइंस। सो एक लाइन बना रही है 2 थीटा एंगल, एक लाइन पाई माइनस थीटा, एंड लास्ट लाइन है which is actually going like this. Okay, actually पहले अपने को ये दो लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए थी एक्चुअली, राइट। सो एक बना रही है पाई माइनस थीटा एंड द अदर वन इज एक्चुअली फॉर्मिंग क्या, पाई अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2 और समथिंग, राइट। ओके, सो ये बना रहा है पाई अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है। एंड फाइनली जो लास्ट line is draw it like this. So this is forming 2 theta, right? Yeah, and we just want इस triangle का maximum. So ये बना रहा है 2 theta from here. This line is making pi minus theta with the x-axis. So right, angle that we're looking for is of course like okay, ये जो पूरा angle रहेगा उसका उसका supplement of course. So वो पूरा एंगल है कितना, पाई माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 3 थीटा, बट सप्लीमेंट ऑफ दैट इज 3 थीटा। सो एक एंगल हो सकता है 3 थीटा, दूसरा देखते हैं विद 2 थीटा, ये वाला दे लो। सो पाई अपॉन 2 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा इज लाइक स्टिल पाई अपॉन shit, it's supposed to be pi upon minus theta upon 2, right? Yeah, this whole thing is pi upon minus theta upon, okay, minus 2 theta, which is supposed to be that. Offers the complement, sorry, supplement, which is pi upon 2 plus theta upon 2 plus 2 theta, right? And lastly, you just want इन दोनों के बीच का एंगल, which is okay, that's easy to find out. pi minus theta और उसका आधा, right? Oh, that's nice, इसका आधा, unexpected, awesome. Okay, so yeah, that will just be pi upon 2 minus theta upon 2. अब इनमें से कौन सा एक्चुअली काम करता है, that's the thing. So yeah, कौन सा सबसे बड़ा है? क्या ये इससे बड़ा है? दैट्स लाइक आस्किंग इज थीटा बिगर देन, बेसिकली थीटा अपॉन 2 बिगर देन पाई अपॉन 2, नो इट्स नॉट। सो ये बड़ा होगा इससे, राइट। एंड यू वांट लार्जेस्ट एंगल, तो इसको एलिमिनेट कर डालो, क्या ये इससे भी बड़ा है? सो दैट्स लाइक आस्किंग इज थीटा प्लस, हाँ है ना, दिख ही रहा है अपने को। सो दिस इज द लार्जेस्ट एंगल इन फैक्ट। सो पाई अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2, लाइक पाई प्लस थीटा अपॉन 2 बड़ा डायरेक्टली। ये तो यार इतना बड़ा है तो ऑब्ट्यूस है। Is this correct? I don't know. Calculation to तुमको ये मिला. So. Anyway, just keep going. We'll see what we get. ठीक है. So अपने क्या करना था वैसे? कहाँ पे चला गया था? क्वेश्चन क्या है? 49 का B कर रहे थे अपन. And theta is 43 degree, तो ये एंगल कैलकुलेट करते हैं। इसका भी 90 डिग्री प्लस 43 डिग्री का आता, which is just 1.5. okay, और फिर 2 theta is supposed to be 86 I think. So of course ये obtuse है, shit, ये 180 के ऊपर है। no, it's god, 180 के ऊपर है ये तो, क्या कर दूँ क्या पे? सेकेंड वाला जो था अपन ने कब किया था, जब ये चीज और ये चीज के बीच का अपन एंगल ढूंढ रहे थे। सो फॉर दैट व्हाट यू वुड एक्चुअली डू इज पाई अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2 माइनस 2 थीटा इज दिस एंगल, व्हिच इज नॉट व्हाट वी एक्चुअली डिड। सो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, शिट। फिर ये तो इससे बड़ा होगा। सो एक्चुअली 3 थीटा इज आई थिंक मे बी द लार्जेस्ट, और ऑफ कोर्स इट्स बिगर देन दिस थिंग बिकॉज 3 थीटा ऑलरेडी पाई 1.2 से बड़ा है। सो या दिस इज लार्जेस्ट एंगल, सो 3 टाइम्स ऑफ दैट, व्हिच इज क्या कितना था ये 43 डिग्री, उसका ट्रिपल, सो 9 and 12 129, व्हिच इज ऑप्शन आर। नेक्स्ट सी करते हैं। The equation of two sides of rhombus are given, and equation of one of the diagonals is given. Equation of one of the two sides is this. अच्छा, so okay, तुम्हें maybe like दो adjacent sides दिए शायद से supposed to be, हाँ adjacent sides दिए, okay, और एक diagonal दिया है। okay, इनका subtraction करूँ मैं डायरेक्ट, तो मेरे को क्या मिलता है वैसे? और इज लाइक ओके
6x and then subtract that plus 12y, subtract this, right, which will be minus 4 minus 50 54, right? So इसको reduce करो, x plus 2y minus so ये 6 का multiple है of course 9, which is not this thing. तो ये अलग है, मतलब ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है, राइट? यार ये माउस, राइट? So okay, we found out one of the diagonals, other diagonal as well. The equation of one of the two sides is given by this. C is crazy. So ये subtraction diagonal है, ये addition diagonal है. Again, like that. Wait, subtract किया तो मैंने exactly किया क्या? ऐसा एक जो कि मैंने क्यों subtract किया इसलिए तो सही नहीं हुआ यार, मैंने subtract, it's not a pair of straight lines you can subtract करके मुझे diagonal मिल जाए, that's not the thing. तो मैंने subtract किया, what did I do? ऐसे कौन से, right, shit, ये काम नहीं करेगा, ये कुछ ही कुछ हो जाएगा, right? Like don't do that. क्या कर सकता हूँ मैं, पॉइंट्स ढूंढने पड़ेगा अपने को, और भी तरीका थोड़ी है. So ये चीज और ये चीज, right? It's gonna take forever. ठीक है, करते हैं, let's do it. So 9x plus 2y is equal to 17, और यहाँ से क्या जाएगा, 9x plus minus 30y is equal to minus 37 times 3, so minus 111, subtract 32y is equal to 128, y is you can get 2 power 7, this is 2 power 5, this is 2 power 2, which is 4, y equal to 4, put that inside. So 9x is equal to 17 minus of 8, which is 9. So there we go. 1,4 is one of the points of the right? So yeah, one of the diagonals is given. Of course, no इनके बीच में, right? You can just find what that, क्या ये इसको satisfy करता है? Is it satisfy that? 3 minus क्या है ये, 4 times 8, नहीं करता है, right? So ये वो वाला तो नहीं है. So ouch, क्या हो रहा है, क्या हो गया था ये बीच में, आओ. ओके, जस्ट कंप्लीट करता हूँ और फिर तो मैं रेस्ट लूँगा, राइट? सो अपने को ये वाला पॉइंट मिल गया, अपने को दूसरा पॉइंट, जो दूसरा डायगोनल वाला पॉइंट है, वो अपने को ये चीज़, ये दोनों सॉल्व करके मिल जाएगा, राइट? या और फिर अपने को वो पॉइंट मिल जाएगा. उसके बाद में क्या, राइट? इट डजंट एक्चुअली सेटिस्फाई. अपने को 3 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे, राइट? ओके, और ये वाला पॉइंट ढूंढने के लिए क्या होगा, मिड पॉइंट सेम है, वो चीज़ यूज करूँगा. इट्स ओके, नो बिग डील. Other side, one of the other side is, so 3x minus 10y वाली साइड ये एक है, और ये 9x plus वाली साइड है, ये अपने को डायगोनल पता है. Want ये वाली साइड क्या है, it's gonna satisfy this thing as well as that thing, right? Hey, isn't that like, अच्छा अगर मैं इसको कोई टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन कर डालूं, so 9x plus 2y minus 17 और 3x minus 10y plus, sorry, 9x minus 2y minus 17 और ये चीज 3x minus 2y minus 10 equal to 0. अगर मैं इससे कोई ऐसा अच्छा लीनियर कॉम्बिनेशन करूं कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, then you are done, right? Yeah, that will be it. So हाँ, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ. So what I'm thinking is, okay, 9x minus 2y minus 19 और 3x up, 3x 9x plus 2y minus 17 is equal to 0. अगर मैं इनको क्यों कर रहा हूँ मैं कॉम्बिनेशन, मुझे बस ये ढूंढना है कि वो कौन सा पॉइंट है, एंड देन यू आर डन. एंड देन अपने को सिर्फ यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट दिस थिंग इज, राइट? नो नीड फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन और व्हाटएवर. फिर मुझे ये पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं थी, मैंने फालतू में किया. मुझे लगा मुझे पूरा ढूंढना पड़ेगा. ओके, सो जस्ट इसको सबट्रैक्ट ऐड करो डायरेक्टली. सो 12x minus is equal to 36. So x is equal to 3. So 2y is equal to 17 minus
9 plus 6 is 27, which is just negative 10. So y equal to negative 5. So 3 comma negative 5 to point है, that's gonna pass through this thing, right? Yeah. So just इसको put कर दो. 9 plus 15. That's the value of c. So c should just be 59, which is option S. C का answer S होगा. Let's go to D now. The equation of hypotenuse of right isosceles triangle is x minus 2y. Okay, if the vertex is this, then the area is. Hypotenuse तुम्हें दिया है of a right isosceles triangle. Oh, if the vertex is this, अच्छा इसमें lie करता है. Vertex is C. Okay, so दूसरा vertex है ना, obviously, because right, it doesn't lie on that. That confirms कि दूसरा वाला vertex, मतलब ये जो hypotenuse पे नहीं है वो वाला vertex है. Right, और आपने को चाहिए the area of course, right, and it's a what right isosceles triangle. Nice. Right, isosceles triangle. It's gonna be 45 degree like this. अपने को ये distance मिल गया, you are done basically, right? Just figure out what the distance is supposed to be first of all. So distance इसका क्या होगा? 1 minus 12 minus 3 upon इसका mod basically upon square root of 1 plus 4, right? Which is, so 12 plus 3 is 15 minus 1 is like 14. So 14 upon square root 5, that's the thing. That is the distance, sure. आपने क्या करना है? अपने को करना है, अपने को ये डिस्टेंस मिल गया है, सो डी बोल दो बेसिकली. ये चीज 2d हो जाएगी. सो जो पूरा एरिया है, इट्स एज इफ तुमने इसको फ्लिप कर दिया और शिफ्ट कर दिया. ओके, व्हाटएवर. सो d टाइम्स 3d स्क्वायर, राइट? सो इसका स्क्वायर क्या होगा? बट ये तो 5 है ना. ओह ओके, 196.5, दैट मेक्स सेंस. सो इसका आंसर p है. 50. If f of x is equal to ये चीज, then f of x is 1 1 and on to whatever. 4 minus x square when x is less than 0. 2 minus 3x is sure. X is less than 0 you're saying. So it's gonna reach negative infinity for sure. वो तो अपने आप हो जाएगा. At 0 it's just 4. At 0 ये वाला जो definition that just gives us 2. Oh, this is not nice. तो ग्राफ करो थोड़ा सा. So it's centered at x equal to 0 of course, right? So ये 0 पे रहेगा, means like this. Okay, उसके बाद में क्या है? 2 minus 3x. So between 0 and 1. So ये inclusive है of course, और ये exclusive रहेगा, something like that. ये होता है x equal to 2/3 पे 0. So right, till okay 1 पे क्या हो रहा है? -1, right? So 2 से अब ये -1 पे जा रहा है, somewhere over there. Inclusive, yes. Of course it happens at 1. Okay, whatever. और फिर क्या? फिर it's 2x minus 4, right? So x equal to 1 पे इसकी वैल्यू क्या है? It's just -2, which is somewhere over here. Exclusive. और उसके आगे बस चलते जाएगा. So yes, it is on to, because ये नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक और फिर 0 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स इसमें रहने वाले. नो बिग डील. बट इज इट 1 1? नहीं. थिंग इज, तुम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो कि तुम्हें 2 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू मिली है इसकी. सो इट्स नॉट 1 1 बट इट इज ऑन टू. अच्छा, और क्या है? f(x) has exactly one local extremum. Local extremum, yes, it has only one, because this, yeah. नहीं, wait. Okay, yeah, it's correct, because यहाँ पे local extremum नहीं है, right? यहाँ पे अगर ये maxima होता, then it's not the maximum. Wait, but ये भी तो इनफैक्ट लोकल, ये मिनिमा रहेगा ना, लोकल मिनिमा, बिकॉज इसके बाजू के सारे पॉइंट्स जो है ऐसे छोटे. सो या राइट, बट वो इंक्लूसिव तो है नहीं, तो अपने को उसको गिनना है कि नहीं गिनना है? आई थिंक अपने को उसको गिनना है, बिकॉज इवन दो वहाँ पे अपने को पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है, बट वो है तो एटलीस्ट, राइट? वहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिल जाएगा. सो आई थिंक इट हैज अ मिनिमम ओवर हियर. क्या बोलूँ मैं इसको? लोकल मिनिमम बोलेगी नहीं बोलेगी? ये इंक्लूसिव नहीं है अनफॉर्चुनेटली. नो आइडिया.
ठीक है, आई डोंट नो, क्यूब एंड कमेंट नहीं कर स्पेसिफिक. X equal to 0 is the point of local maximum. Yes, it is. F is continuous at x equal to 0. No, it's not. So R, I think A का R. ओके, सिर्फ इतना ही मैं बोल सकता हूँ. नेक्स्ट B करते हैं. If f real to real is defined like this, x cube plus x square plus 4x plus sin x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव है 3x square plus 2x plus plus 4 plus cosine x. Is this, इस चीज का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इसको छोड़ देते, इसको 3 प्लस ये लिखता हूँ, 3 प्लस 1, that this actually is positive or something. इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b square is like 4 minus 4 times of 3 times 3. हाँ, नेगेटिव है. What does that mean? This thing is always positive, so it's just increasing throughout. Negative infinity by negative infinity है, फिर so it's 1 1 and on 2. So b का आंसर p, और it's continuous everywhere. So हाँ, and there's no extrema values. So b का आंसर p. There we go. Okay, let's go to C now. F dash of x is given by this thing. F of 0 is 0. Okay. And that's also equal to f of 1 upon pi. हाँ. Okay. So क्या करना है मुझे? एफ एक्स इज 1 1. अच्छा, इसमें कोई वेरिएबल तो डाले नहीं है, तो फिर ये क्यों तुम्हें मुझे देने की जरूरत थी? आई डोंट नो. ओके, इज इट 1 1 एंड ऑन टू? इसका डेरिवेटिव एक्स में, ओह अच्छा, मुझे को फंक्शन पता नहीं है, फिर सिर्फ डेरिवेटिव पता है. ओके. एफ ऑफ 0 इज 0 एंड एफ ऑफ 1 अपॉन पाई इज आल्सो 0. वेट, फिर तो हो गया, फिर 1 1 तो हो नहीं सकता बिकॉज दो पॉइंट्स पे. ठीक है. इज इट ऑन टू? एफ डैश इज this thing. Is this positive everywhere? I don't think it is. It can't be. How is this like positive everywhere? No. For example, let's just say x equal to -1. काम पर जाएगा नहीं. Okay. So कि इंटीजर वैल्यूज काम नहीं करेगी, राइट? यार तो बहुत वेरिएबल रेंज हो जाएगी इसकी. 3 times of that you said. अच्छा, let's just say x is equal to 1 upon 2n pi, right? So as n tends to infinity, क्या हो रहा है? Just putting that over there, यहाँ पे आ रहा है 3 upon जो भी है 2n square pi, जो भी आ रहा है. Sin of 1 upon x tending to 0. Cool. ये तो ऐसे मर जाएगा, right? And just not go for n equal to infinity, but instead बड़ी वैल्यू रख रहा है, बट नॉट दैट बिग, इन्फिनिटी नहीं अप्रोच कर रहा है. एंड देन ये चीज जस्ट -1 अपॉन 2n पाई एंड देन कोसाइन. यस, लाइक ये नेगेटिव हो रहा है, सो ऑफ कोर्स f कैन बी नेगेटिव, नो बिग डील. एंड या इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल. x टेंड्स टू इंफिनिटी, इट्स गोना बी पॉजिटिव, अज्यूमिंग कि ये चीज पॉजिटिव. ओह, इट्स गोना डेविएट अ लॉट एक्चुअली. ठीक है. सो इट्स नॉट 1 1, ईदर इज इट ऑन टू. वेट, इज इट नॉट ऑन टू? Can't it just go to negative infinity? Can it? Can it go to negative infinity? क्या इसकी कोई मिनिमम वैल्यू रहने वाली है? This is not nice. Negative x. We know Indian इसको overpower कर लेता है. Sin 1 upon x. At max क्या हो सकता है? अच्छा, इसका अपने को क्योंकि मिनिमाइजेशन करना है, you know, right? So इससे छोटा से छोटा कर डालते हैं, which will be like at x is equal to, right? Okay, cosine of 1 upon x को भूल जाओ, वो है ही नहीं, अब 1 है, और sin of 1 upon x को 0 कर डालो. So negative x, right? That actually can go to infinity or something. Not looking nice यार, अजीब हो रहा है नहीं. इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए मोस्ट लाइकली, कोई तो भी. लो इसका डेरिवेटिव लो, इस डेरिवेटिव लेके देखते हैं. So 6x sine of 1 upon x, right? And then what? इसका डेरिवेटिव like 3x square, इसका हो जाएगा -1 -3 and then cosine of 1 upon x, right? फिर इसका डेरिवेटिव, so minus cosine of 1 upon x and then plus x sine of 1 upon x, but that has negative 1 upon x, so it's like minus 1 upon x sine of 1 upon x. When is this equal to 0? Like asking कि sin of 1 upon x times 6x minus x. ये तो बहुत ही गंदा सा कुछ हो रहा है.
when is that equal to 4 cosine of 1 upon x, which means कि tan of 1 upon x must be equal to 4 upon ये बहुत घटिया सब हो रहा है. At least it's not on to. Okay, ये तो ऑलरेडी हो गया ना, मतलब ये काम नहीं करेगा अगर 1 1 काम नहीं तो on to क्यों काम करने वाला, कुछ दोनों एक ऑप्शन है. Does it have one local maximum? No, it has many. X equal to 0 point of local maximum, इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं. काम ओके डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है इनफैक्ट, राइट. Fluctuates a lot. Okay, it's zero. Yes, it's continuous and everything, but it fluctuates a lot, right? So this is okay. This is zero. This we don't know what is going on over here. और ये क्या हो रहा है? Negative. Oh shit. Negative 1 upon x है यहाँ पे. Can't say anything. Okay. F of 0 is equal to 0 is equal to f of 1 upon pi. It's a derivative for that guy. Oh shit. Oh sorry. This is the derivative that we take. मुझे अभी तक f लग रहा था. मैं क्या घटिया चीज कर रहा हूँ. अच्छा, ये हमेशा पॉजिटिव तो नहीं है, एटलीस्ट अपन ऐसा बोल सकते हैं. और इसके बहुत सारे एक्सट्रीमम्स रहने वाले हैं. या नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है. नो बिग डील अबाउट दैट. So it's definitely not 1 1 and not 2. It has exactly no x equal to 0, क्योंकि हाँ मतलब हजारों पॉइंट्स है, जहाँ पे ये हो सकता है कि 0 हो जाए ये चीज, राइट. तो अपन इसका डायरेक्ट चेक कर चुके हैं, तो x equal to 0 is a point of local maximum, but I mean वहाँ पर डेरिवेटिव तो 0 है एटलीस्ट. ओके, does that mean it's maximum? इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है that's not actually, I mean, oh god. So we don't know ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, क्योंकि ये चीज तो बहुत फ्लक्चुएट हो रही है. राइट, आई मीन इट्स, आई डोंट नो, इट्स कंटिन्यूअस एट, ओके एटलीस्ट दैट्स करेक्ट. सो अपन एस तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, सी का अपन एस बोल सकते हैं. डी का क्या है? एफ एक्स इज दिस पॉलिनोमियल, देन अच्छा फिर कंटिन्यूअस तो रहेगा बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन है. सो एस तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं. फिर अपन ने बी के लिए क्यों नहीं एस बोला? सो बी के लिए भी अपन एस बोल सकते हैं अपन, ओके. ए के लिए तो नहीं बोल सकते. व्हाट अबाउट सी? सी के लिए अपन ऑलरेडी बोल चुके हैं. डी के लिए भी बोल सकते हैं. सो एस तो है ही. फिर एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. एफ डैश क्या है? एफ डैश इज 12x क्यूब माइनस 12x. वाओ, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है. सॉरी, इट वाज लाइक व्हाट एक्स, नॉट दैट थिंग. Except x equal to 0 because it changes actually. It's like 12x times x square minus x plus 1. तो ये चीज़ तो हमेशा मतलब 0 हो नहीं सकती और ये चेंज नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है. नो वरी अबाउट दैट. Only at x equal to 0 do you get an extremum. So q अपन बोल सकते हैं इसके लिए. Is this a maxima or minima? So I think it's a minima because ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है. सो इट्स गोइंग टू बी मिनिमा, और कोई चीज हो सकती. सो या, नॉट अ लोकल मैक्सिमा, इट्स अ मिनिमम वैल्यू. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट क्या, आप तो बस काफी है. सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.